Namaskar. Good afternoon to all the friends who have joined in for this live session. आज का जो प्रोग्राम है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर है. आज का जो सेशन है इसके लिए हमारे जो एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर पांडा हैं और ये हमारे डायरेक्टर हैं स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू में. और इससे पहले प्रोफेसर पांडा एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरपर्सन भी रहे हैं और इन्होंने पहले डायरेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का रोल भी अदा किया है. तो आज सर हमारे साथ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पर बोलेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो बोलें मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा. ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं और इसके तहत 14 यूनिट्स हैं जिसमें 30 से ज़्यादा वीडियोस उपलब्ध हैं. इनमें प्रोफेसर कस्तूरी रंगन का भी वीडियो है. इसके अलावा हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का भी वीडियो है. ये वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग है. मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा. इसके अलावा हमारे इस स्वयं प्लेटफॉर्म में डिस्कशन फोरम है जिसमें मेरी आग्रह होगी आपसे कि आप लोग डिस्कशन फोरम में भी पार्टिसिपेट करिएगा. इसमें आपकी राय रखिएगा और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. और इसका जो URL है जो लाइव कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है ये हमारे COE लाइव यूट्यूब चैनल में भी उपलब्ध होता है. और अब तक जो है 8 बैचेस हो चुके हैं जिसमें 48 से ज़्यादा वीडियो वीडियो बन चुके हैं COE लाइव के. और ये सब भी हमारे यूट्यूब चैनल में COE लाइव यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं. इसको भी मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग इसको देख सकते हैं. और छठा दिन के बाद हमारे जो MCQs हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे जिस पे 30% मार्क्स का वेटेज होता है. इसमें आपको सवाल जवाब देना पड़ता है जिसमें आपको 30% वेटेज का आप स्कोर कर सकते हैं. और ये पूरे सेशंस ख़त्म होने के बाद एक टर्म एंड एग्ज़ाम भी होता है जिसमें 70% वेटेज होता है. तो ये हमारा प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है. और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने जो साथियों हैं उनको एनकरेज करें कि वो लोग भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें. जो लोग इसमें एनरोल नहीं किए हैं उनको भी आप एनकरेज करें कि वो लोग एनरोल कर सकें. और अब मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर पांडा को इस प्रोग्राम में आगे बात रखने के लिए. विद इन फ्यू सेकेंड्स वी विल मूव टू प्रोफेसर पांडा's प्रेजेंटेशन. So friends, welcome to this Swayamprabha conferencing, live chat conferencing presentation on NEP 2020. ये जैसे डॉक्टर तिर्के ने आपको बताया, this is part of our NEP PDP National Training Program for 6 days, 36 hours, which can be completed in 9 days. And today's presentation will be on NEP 2020, the National Credit Framework. हाल ही में in September, which is now available to all of you, can also download this document from UGC website, the National Credit Framework 2022. So NEP 2020 जुलाई में आया था और National Credit Framework अभी September 2022 में आया है. National Credit Framework अभी क्रेडिट के बारे में बात करेंगे, फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे. और इससे पहले बिफोर दिस वी ऑलरेडी हैड द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. यू मस्ट हैव इम्प्लीमेंटेड द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसमें 3 साल का 132 क्रेडिट्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 4 तरह की कोर्सेज होते थे. तो उसमें स्किल बेस्ड, एबिलिटी एनहांसमेंट, सोशल एंड लाइफ स्किल्स ऐसे भी प्रावधान थे और डिसिप्लिन कोर और डिसिप्लिन इलेक्टिव्स थे. उसके साथ साथ AICTE
तो उन्होंने स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एजुकेशन ऑफ यूथ संभव AICT ने उसको जारी किया था, जिसको सारा देश भी फॉलो कर रहा है। उससे पहले हमारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क है जो 2013 से लागू है, और UGC ने हाल ही में इस साल नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन, सो नेशनल स्किल फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, नेशनल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन, और उसके साथ साथ वो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो 2022 की अभी आपके सामने चर्चा होगा, तो उसके तहत नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत आया है, तो वो भी हमारे सामने शामिल है। ये तमाम चीज़ों को मिला के आपकी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनी है। बट उसमें एक चीज़ मैं साफ कर दूं कि जो डिस्टेंस लर्निंग की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो भी अपनी क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉलो करते थे। एक्रेडिटेशन प्रायर लर्निंग जो वोकेशनल एजुकेशन से इस वक्त तो 2022 की सितंबर की जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, उसके तहत अगर कोई ITI का स्टूडेंट है, क्लास 10 पास किया है और एक लैंग्वेज कोर्सेज लेंगे और उसमें जितनी उनके एक्सपीरियंस है वो क्रेडिट हो जाएगा, ग्रेड 12 भी इक्विवेलेंट होंगे, तो वो भी हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। इस तरह का प्रावधान भी इसमें है, और कल और आज दोनों न्यूज़पेपर में भी इसकी चर्चा हुई है। और उसके साथ साथ जब 1987 से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऑफर करना शुरू किया, तो हमारा एक क्रेडिट फ्रेमवर्क है। तो फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट में 1 credit was equivalent to 15 hours of teaching by teachers teaching। उसमें स्टूडेंट्स लर्निंग का जिक्र नहीं है, हालांकि स्टूडेंट लर्निंग भी करता है, अपना घर में टाइम लगाता है। और डिस्टेंस लर्निंग में 1 credit is equivalent to 30 hours of students learning। इसके भी जिक्र नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में, क्रेडिट फ्रेमवर्क में हुआ है। तो उसको ये तमाम चीज़ों को साथ लेते हुए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVET जो है, जो नेशनल स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल की जो रेगुलेटरी बॉडी है, तो वो AICT UGC तमाम के साथ बैठ के, नीति आयोग और तमाम उनके साथ बैठ के ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बना है। जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की मैं चर्चा करूंगा, the national credit framework that I am going to discuss very briefly with you. You can download the document and go through it, and various tables and matrices. Then you have to go through how this is calculated, how the previous learning, accreditation of prior learning or recognition of prior learning, RPL, how the previous learning or experience is accredited with what formula. I will also discuss these things, but very briefly, we have half an hour with you, and after that we'll take up your questions also and respond to that. Indira Gandhi National Open University, as I was telling, that we had a credit framework. 1 credit is 30 students' hours of study, and now we are all shifting to the credit framework of 40 credits a year. So 40 credits a year is the minimum. Now we are getting into that. We have already got into that. We have implemented the national education policy for almost last 2 years. जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 से, तभी से हमारा लगातार प्रयास है और हम उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। हाल ही में हम लोगों ने एक स्कीम के तहत ITI पॉलिटेक्निक मिनिस्ट्री ऑफ स्किलिंग के तहत हम लोगों का MOU के तहत हम लोगों ने तय किया। पहले ये प्रावधान था कि अगर आपका 75% ऑफ कोर्स करिकुलम अगर हमारे साथ मैच करता है, हम 50% क्रेडिट एग्जेम्प्ट करेंगे या क्रेडिट आपके ट्रांसफ़र करेंगे, और स्टूडेंट 50% क्रेडिट हमारे साथ करेगा और वो अंडरग्रेजुएट डिग्री ले सकता है। और उसके बाद एक डेवलपमेंट है, बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट है, that the students of ITI, those who have a lot more experiences in their skill development and competencies in diversified areas of their work, that if they could also join Indira Gandhi National Open University for the undergraduate program, 50% up to 50% depending on how the credit is evaluated, what experiences they have, और उनके साथ साथ वो कितने क्रेडिट वो अचीव कर पाते हैं। लेकिन उसके एक तरीका मैं भी बताऊंगा आपको कैसे असेसमेंट होगा।
तो वो क्रेडिट अप टू 50% क्रेडिट हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एग्जेम्प्ट करेंगे, और हमसे वो 50% क्रेडिट करेंगे, और 50% कंप्लीशन के बाद तो प्रीवियस 50% क्रेडिट जो उनके खाते में रहेगा और हमारी 50% क्रेडिट, दोनों मिल के 100% दे विल टेक द अंडर ग्रेजुएट डिग्री। ये भी प्रावधान है। और ये तमाम मिलाते हुए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो बन रही है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत, 4 तरह की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन रही हैं जो स्कूल एजुकेशन का हाल ही में अप टू एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने देश को सौंपा है, समर्पित किया है, वो लागू हो चुका है। और पूरी स्कूल एजुकेशन का अभी जल्दी ही शामिल होगा, और टीचर एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, ये तमाम 4 तरह की नेशनल फ्रेमवर्क बन रही है, करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसके तहत नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो क्रेडिट में इक्विवेलेंस के तहत आएगा, और ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का हिस्सा भी बनेगा। सो उससे पहले नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जो आप पढ़े होंगे, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो कर चुके हैं जो चर्चा हो चुका है, और वो क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क के तहत बेस्ड था, जो 10 लेवल के पहले हुआ करते थे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, और जो इस वक्त 8 लेवल के हैं जिसके चर्चा हम करेंगे। और उसके साथ साथ AICT का समवाय भी हमारे पास था, और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी था, और इग्नो का भी एक्सपीरियंस और NIOS का भी एक्सपीरियंस हमारे साथ था। ये कुल मिलाते हुए जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आपके सामने 2022 का आया है, वो एक ओवरआर्किंग ओवरऑल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो सबको मान्यता होगा देश में। सभी बैठ के इसको तैयार किए हैं और क्रेडिट फ्रेमवर्क लागू हो जाएगा। मीनिंग देयरबाय जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो स्किल को क्रेडिट टेस्टिंग, असेसमेंट और क्रेडिट ट्रांसफ़र करता था, और जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो इग्नो करते थे, जो NIOS करता था, तो ये तमाम उसमें, और AICT के जो थे, ये तमाम उसमें शामिल होंगे, जिसमें सब संस्था, हायर एजुकेशन संस्था इंक्लूडिंग IITs, IIMs एंड ऑल प्रोफेशनल एजुकेशन, बिकॉज AICT is involved in this, all have been joining this national credit framework, meaning thereby that सभी ने इस क्रेडिट फ्रेमवर्क को लागू करेंगे। अभी ये दिस हैज बीन नाउ डेडिकेटेड टू द नेशन, क्रेडिट फ्रेमवर्क उपलब्ध है, और आगे जो करिकुलम बनेगा 40 क्रेडिट से ईयर मिनिमम बनेगा। और नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट आप रिकॉल करेंगे कि फर्स्ट ईयर करेगा सर्टिफिकेट 40 क्रेडिट्स काम में जा सकता है, फिर वापस आ सकता है। सेकेंड ईयर करेगा अनदर 40 क्रेडिट्स मीनिंग देयर बाय 80 क्रेडिट्स, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर करेगा तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ 120 क्रेडिट्स वो डिग्री ले सकता है। अगर फोर्थ ईयर में कंटिन्यू रहता है दैट विल बी अंडर ग्रेजुएट डिग्री विथ रिसर्च, ऑनर्स और रिसर्च उसमें होगा जो 160 क्रेडिट्स। दिल्ली विश्वविद्यालय 176 क्रेडिट्स का फर्स्ट सेमेस्टर अभी लागू हो गया है, चालू है, और स्टूडेंट्स एडमिटेड हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और जिसमें वोकेशनल एजुकेशन, इंटर्नशिप और लिबरल फाउंडेशन एजुकेशन और ये कंपलसरी होंगे। ऑलमोस्ट 50% विल बी डिसिप्लिन कोर एंड डिसिप्लिन इलेक्टिव्स, और रेस्ट ऑफ द 50% जो क्रेडिट्स हैं तो वो आपकी स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिटी एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, सोशल एंड लाइफ स्किल्स, इन तमाम में, और रिसर्च एंड इंटर्नशिप इसमें शामिल होंगे। सो वो फ्रेमवर्क की चर्चा हम और कहीं किए हैं, तो आप COE लाइव में यूट्यूब में इसको भी देख सकते हैं। यू कैन एक्सेस COE लाइव एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस ऑलमोस्ट 48 video programs that have already been presented, and they are available over there. You can also go through and download. You may not be able to download, but you can go through those. But if you get into the SWAYM platform of NEP, our platform, then you can download our almost 31 videos that are available there. And all these videos we are also editing and putting in the SWAYM so that you can download. You cannot download from YouTube, but you can download from the SWAYM platform. So let me proceed with the formal presentation of the National Credit Framework, friends. What you see on your screen is that National Credit Framework ये बातें कर रहा है that learning will be expressed in terms of credits. Whatever learning, and learning could be, it talks about 3-4 kinds of learning.
Formal learning which takes place in classroom or at a distance or online or blended, that will be formal learning. There could be also non-formal learning. That could also be learning as experiences, somebody's work experience. So these three kinds of learning will also be expressed in terms of credits. Credit is nothing but the achievement of learning outcomes while going through a course of study or program of study or a project or a hands-on or any work or job experience. All of these will be calculated in terms of credits. एंड क्रेडिट की डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, क्रेडिट के आवर्स में आपको बताऊंगा किस तरह के कैलकुलेटेड होंगे, और तमाम जितनी तरह का एक्सपीरियंस क्रेडिट, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, all of these will be coming into non-formal also in terms of work experience. जैसे हम 50% इग्नो में ITI का ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 50% अपना कोर्स क्रेडिट देके पूरा डिग्री, अंडर ग्रेजुएट डिग्री स्टूडेंट्स ले सकता है. सो लर्निंग विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स. और जो लर्निंग होगा वो तीन तरह की हो सकता है. एक एकेडमिक लर्निंग, और जिसमें हमारा स्किल भी इन्वॉल्व है, जो डे टू डे टीचिंग एंड लर्निंग हम लोग करते हैं हायर एजुकेशन में, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन. वोकेशनल एरिया, बिकॉज आपको जानकारी होगा हमारे देश में जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन दो पैरेलल सिस्टम है, और वोकेशनल एजुकेशन स्कूल वोकेशनल एजुकेशन से शुरू होते हुए वोकेशनल यूनिवर्सिटी में आपको, जिसको आप स्किल यूनिवर्सिटी कहते हैं, तो उसमें उपलब्ध है. उनके एक पैरेलल सिस्टम है, और बीच में सिर्फ बी वोक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ऑफ यूजीसी, which is based on the National Skill Qualifications Framework, but which is offered by UGC. The rest of the vocational courses are governed by the National Skill Qualifications Framework and उसकी regulator NCVET, National Council for Vocational Education and Training, वो है. So आपकी लर्निंग तीन तरह का हो सकता है. एकेडमिक लर्निंग जो हम क्लासरूम में डिस्टेंस लर्निंग में कराते हैं, वोकेशनल जो ऑन द जॉब एक्सपीरियंस उसमें भी शामिल है, और एक्सपीरियंशियल ये है जो कोई जॉब कर रहा है लेकिन उसमें एक्सपीरियंस गेन किया है, वो एक्सपीरियंस को भी क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसको हम कहेंगे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग. तो ये तीन तरह का आपके सामने हो सकता है. देन क्रेडिट को एक क्रेडिटाइजेशन किया जाएगा, उसका क्रेडिट वैल्यू कितना रहेगा, और क्रेडिट वैल्यू के साथ साथ हम लोग उसको क्रेडिट एक्यूमुलेट करेगा, क्रेडिट को स्टोर करेगा, क्रेडिट को ट्रांसफ़र करेगा और क्रेडिट को रिडेम्प्ट करेगा. और इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का प्रावधान है. अगर आपकी संस्था और आपकी प्रोग्राम्स और आपकी स्टूडेंट्स, मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि आपकी संस्था जितनी जल्दी एकेडमिक नेशनल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर हो, और आपके स्टूडेंट्स, हर कोई स्टूडेंट्स 2022 से आपकी जो क्रेडिट एक्यूमुलेट होगा स्टूडेंट का, क्योंकि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अपने डिसिप्लिन कोर और इलेक्टिव के साथ साथ मल्टी और डिसिप्लिन से कोर्सेस ले सकता है, और वो कोर्सेस अपनी संस्था से ले सकता है, अपने शहर में दूसरे कोई कॉलेज है उससे ले सकता है, डिस्टेंस लर्निंग से, ऑनलाइन लर्निंग से ले सकता है, और स्वयं अप टू 40% क्रेडिट अलाउ करता है स्टूडेंट को कि 40% क्रेडिट आप स्वयं से भी ले सकते हैं. जो 60% क्लासरूम टीचिंग होगा, 60 और 40 मिलकर 100% कैन लीड टू ए डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री. तो ये प्रावधान है. देन देयर विल बी मोबिलिटी बिटवीन जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन. उसके पूरी प्रावधान जो हमारे दिक्कत इस देश में थी कि जनरल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन आपस में बात नहीं करते थे, और क्रेडिट ट्रांसफ़र का तो बात ही छोड़िए. तो लेकिन इस वक्त जनरल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन की कोर्स इक्विवेलेंसी, स्किल इक्विवेलेंसी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स. लर्निंग आउटकम इज नथिंग बट अचीवमेंट ऑफ सर्टन कॉम्पिटेंसी, नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स एंड अदर पर्सनालिटी ट्रेड्स. आज की तारीख में NEP 2020 को देखें, मल्टी डिसिप्लिनरी, वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कई तमाम चीज़ें हैं. वो फ्रेमवर्क 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अभी UGC ने जारी कर दिया अभी हाल ही में. सो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ UGC को भी देखिए. तो वोकेशनल और जनरल एजुकेशन में मोबिलिटी हो पाएगा. एंड ऑल ऑफ दीज विल बी ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टूडेंट जो क्रेडिट एक्यूमुलेट करेगा वो तीन तरह का क्रेडिट हो सकता है. एक एकेडमिक, दूसरा वोकेशनल, तीसरा एक्सपीरियंशियल. ये तमाम क्रेडिट उसमें शामिल होगा, और उसमें क्रेडिट इक्विवेलेंसी होगा. इक्विवेलेंसी बहुत बड़ा मायने रखेगा. इक्विवेलेंसी विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स एट डिफरेंट लेवल्स. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, फोर्थ ईयर, देन फर्स्ट ईयर मास्टर्स, सेकंड ईयर मास्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. प्रोफेशनल एजुकेशन में BTech, MTech, BE, ME, ये तमाम जो सब है, तो उसमें MBA और तमाम चीज़ें, आर्कियोलॉजी है, BArch है, B Pharma है,
टीचर एजुकेशन में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 years आफ्टर +2 वो भी इसमें शामिल है, तो इसकी चर्चा होगी। जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को शामिल किया है। अगर इसके अलावा कुछ रह गया हो तो आप भी इंडिकेट करिएगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग इन हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को लिया है, अपना डिसिप्लिन और आउटसाइड द डिसिप्लिन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स, स्किल कोर्सेज, एक्सपीरियंशियल कोर्सेज, apprenticeship, which is an attachment program, project based learning, problem based learning, portfolio based learning, ये तमाम चीज़ों को मल्टी डिसिप्लिनरी के थ्रू इसको कंसिडर किया गया है कि सबको क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाए और क्रेडिट इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश किया जाए और क्रेडिट ट्रांसफर किया जाए स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट वो कोर्सेज ले रहे हैं। देन इट टॉक्स अबाउट होलिस्टिक एजुकेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, all kinds of education development of the child or the student will take place. So discipline, multidisciplinary, value education, environmental education, skill based education or research and apprenticeship, ये almost compulsory है in a 4-year undergraduate program. These all contribute towards including sports, art and music and language. ये तमाम चीज़ें जिसको आप भारतीय ज्ञान परंपरा कहेंगे, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वो भी इसमें शामिल है, तो वो होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ जा रही है। मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए है, हम डिसिप्लिन में बंध जाते हैं, दूसरे डिसिप्लिन के बारे में जान नहीं पाते हैं, और आज की 21st सेंचुरी स्किल कहता है वी हैव टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर स्टडी शुड बी फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स एंड अदर एरियाज ऑफ स्टडी, सो दैट हमारा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़े, वर्ल्ड व्यू बढ़े और हमारा कॉम्पिटेंसी एंड एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। मिडवे कोर्स करेक्शन इसलिए है कि आपको मौका दिया गया है स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट ईयर के बाद अगर वो चाहें अपना कोर्स ऑफ स्टडी बदला सकते हैं, अपना करियर एक डिसिप्लिन में ले रहे थे वो दूसरे डिसिप्लिन को ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी डुअल डिग्री का प्रावधान है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इफ वन इज टेकिंग वन डिग्री, साइमल्टेनियसली वन कैन ऑल्सो डू अनदर प्रोग्राम ऑफ स्टडी, तो उसका भी प्रावधान है, तो इसलिए मिडवे कोर्स करेक्शन उसका हो सकता है। ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड 3 तरह का ब्लेंडिंग की बात हुई है, दैट हमारा टीचिंग लर्निंग के जो क्रेडिट्स हैं, करिकुलम है, दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 3 डिलीवरी मेथडोलॉजीज। 1 सेल्फ लर्निंग, सम क्रेडिट्स गो फेस टू फेस में कम हो और डिस्टेंस लर्निंग में ज़्यादा हो। सेकेंड, फेस टू फेस जो आपके क्लासरूम में ज़्यादा हो, बट डिस्टेंस लर्निंग में जो स्किल बेस्ड कोर्सेस हैं वो ज़रूर फेस टू फेस हैंड्स ऑन उसमें इन्वॉल्व हो, और उसके साथ साथ हमारा काउंसलिंग ऑलमोस्ट 10% ऑफ द क्रेडिट आवर्स हम इग्नो में कहे हैं कंपल्सरली वी विल प्रोवाइड काउंसलिंग। These days it is online because of COVID. It used to be face to face in our study centers also. Educational acceleration of the gifted, जो gifted हैं, जो जल्दी पढ़ जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए भी प्रावधान है कि वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ 1, 2 साल 3 साल की कोर्सेज प्रोग्राम ऑफ स्टडी उसको कंप्लीट करेंगे, उससे जल्दी कर सकते हैं क्या? और क्रेडिट फ्रेमवर्क में प्रावधान है, यस वो जल्दी कर सकते हैं, या साथ साथ एक डुअल डिग्री भी ले सकते हैं इफ़ दे कैन हैंडल, इफ़ दे आर गिफ्टेड। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इसकी मैंने बात थोड़ी बहुत कर चुका हूँ। सो इक्विवेलेंस ऑफ कोर्सेज एंड क्वालिफिकेशंस, ये क्रेडिट फ्रेमवर्क का 2 मुद्दा है, 2 तरह की इक्विवेलेंस है कि आपकी कोर्स की इक्विवेलेंसी हो और उसके साथ साथ जो क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क है उसकी इक्विवेलेंसी हो। क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क क्या कहता है? जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क जिसके तहत नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क बनी है, वो 4 तरह की बातें कर रही हैं। आप दोनों डॉक्यूमेंट पढ़िएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसमें वाकिफ समझ पाएंगे या पढ़े भी होंगे आप। 4 तरह की वो बातें कर रहे हैं। एक आपकी प्रोफेशनल नॉलेज, कोई भी लेवल की, फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, सेकेंड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, फिर वो डिसिप्लिन के साथ जुड़ा हुआ है, कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है, मॉड्यूल के यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है, दोज विल बी एक्सप्रेस्ड इन 4 डिफरेंट वेज द क्वालिफिकेशंस। वो क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड जो मीट करेगा तो उसको क्रेडिट प्राप्त होगा और उसके बेसिस पर इक्विवेलेंसी होगी। इक्विवेलेंस बिटवीन किसका? 3 तरह का, एकेडमिक, स्किल बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल। ये 3 जो वोकेशनल, एकेडमिक, वोकेशनल एंड एक्सपीरियंस, जो जॉब में ऑन द जॉब एक्सपीरियंस जो है उसकी भी इक्विवेलेंसी होगी, उसको भी मान्यता होगा, उसको भी फायदा होगा। They can credit, they can transfer the credit, they can convert their experience, work experience into credits
एंड दे कैन से दैट आपको 100 क्रेडिट लेना है तो मुझे 50 क्रेडिट आप माफ कर सकते हैं बिकॉज आई हैव इक्विवेलेंसी ऑफ 50 क्रेडिट्स ऑफ एक्सपीरियंस जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत है। सो पहला प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल्स और जो कोर स्किल्स है डिसिप्लिन की, और फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ कॉल्ड अ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कि आप ये डिग्री करने के बाद आप जो जॉब में जाएंगे वो किस तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएंगे, एट व्हाट लेवल, किस तरह की जॉब में आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। दैट मीन्स वॉट एवर यू हैव लर्न उसको आप अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपके लर्निंग कॉन्टेक्स्ट और जॉब कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा। तो अलग हो जाएगा तो इसी वक्त आपको ये सीखना है डाइवर्सिफाइड जॉब कॉन्टेक्स्ट में हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो ये 4 तरह के इंडिकेटर्स हैं जो हमारा क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तरफ सीधा चल पड़े। दैट दिस इज ए ब्रॉड एनेबलिंग फ्रेमवर्क और डिफरेंट रेगुलेटर्स जो होंगे डिफरेंट डिसिप्लिन्स, प्रोफेशनल एरियाज, वो अपनी अपनी तय करेंगे बेस्ड ऑन द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क which includes of course the National Skill Qualifications Framework NSQF, Higher Education National Higher Education Qualifications Framework, National Curriculum Framework या National School Education Framework Qualifications Framework जो 3 तरह की उसमें शामिल है, स्किल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन। इन तीनों को सामने लेते हुए और इसमें डिस्टेंस लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, फेस टू फेस लर्निंग ये भी उसमें शामिल है। The credit value for academic and skill courses at all levels and delivery modes, जिसके इस वक्त मैंने आपको बताया। कोई भी डिलीवरी मोड हो, अभी यूजीसी का सर्कुलर आया है, कोई भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रहा है कि डिस्टेंस, फेस टू फेस, ऑनलाइन ऑल आर इक्विवेलेंट। बेस्ड ऑन व्हिच यूजीसी अभी फाइनली सर्कुलर दिया कि साहब ये ब्लेंडेड लर्निंग के तहत सभी शामिल हैं। तो देयरफॉर फेस टू फेस एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एंड ब्लेंडेड लर्निंग कोई किसी माध्यम से किया हो उसमें सब क्रेडिट इक्विवेलेंसी है प्रोवाइडेड द कन्फर्म्स टू द क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। तो सभी का क्रेडिट ट्रांसफर पॉसिबल है। सो क्रेडिट वैल्यू एकेडमिक और स्किल कोर्सेज दोनों में क्रेडिट वैल्यू और एक्सपीरियंशियल तय होगा। ये भी बात कर रहा है हाउ टू एक्यूमुलेट क्रेडिट्स, हाउ टू ट्रांसफर क्रेडिट्स, और वोकेशनल जनरल एजुकेशन में इक्विवेलेंसी कैसे होगा। और फाइनली इट टॉक्स अबाउट ए यूनिफाइड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन जो इस देश में नहीं हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशन, जनरल, वोकेशनल, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये चारों चीज इसमें शामिल हो गए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मोड्स ऑफ डिलीवरी। क्रेडिट कैसा होगा कि हर साल का क्रेडिट या सेमेस्टर का क्रेडिट 20 होगा, हर साल का क्रेडिट 40 होगा। तो 40 क्रेडिट्स will be equivalent to 1200 hours per year. So what is a credit? Credit completion of course of learning corresponding to a qualification. आप कोई भी कोर्स को कंप्लीट किए, वो कोर्स में लर्निंग आउटकम है, कॉम्पिटेंसी है, जो नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल से तमाम को शामिल उसमें है, और इंक्लूडिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन स्किल्स, सभी चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसको अचीव करने के बाद, लर्निंग आउटकम को अचीव करने के बाद जो तय होता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ए क्वालिफिकेशन, और उसकी फ्रेमवर्क इज ए क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, तो उसको रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट accreditation of any learning subject to assessment. Any learning means formal, non-formal, informal and on the job training. ये तमाम का किसी लेवल पर फर्स्ट ईयर इक्विवेलेंट, सेकेंड ईयर इक्विवेलेंट, थर्ड ईयर इक्विवेलेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मान लीजिए, तो उसमें अगर वो शामिल होता है वो लेवल होगा। कोई भी मैं क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात करूंगा, मेरी कॉम्पिटेंसी है, मैं डिक्लेयर करूंगा मेरे फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट या सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट के लेवल के बराबर है, उसी की लेवल के बेस्ड ऑन दैट लेवल the credit assessment will take place in relation to that level only. It cannot be at different levels. So I have to declare the level, मैं कौन सा लेवल में क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहता हूँ. So therefore, what are important in this national credit framework? Important are courses. Courses can be general courses, vocational courses. The courses can also be relating to the outside world of work or on-the-job training. They all are aligned with the credit framework, qualifications at the given level. Level की अभी बात करेंगे, and desired competency and learning outcomes जो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसी लेवल में उसी competency, चाहे वो face to face हो, distance हो, online हो,
चाहे वो जनरल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो या ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो, जिसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। और चीज़ें मैं आगे बढ़ाते हुए आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये और भी कई चीज़ें फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट में, आप सबसे ज़्यादा फेस टू कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग करते हैं, फेस टू फेस कॉन्टेक्स्ट में और क्या चीज़ शामिल हो सकता है। क्रेडिट लेवल्स किस तरह की होंगे? अब जो 10 तरह की नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क की क्रेडिट है, अब इस वक्त वो 8 को रिड्यूस किया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। स्कूल एजुकेशन अप टू लेवल 4, 1 2 3 4। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन 4.5 से लेके 6 लेवल तक है। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन 6 लेवल से लेके 7 लेवल तक है और पीएचडी लेवल 8। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स, स्किलिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये तमाम कॉम्बिनेशन होके कोई कोर्स को या क्रेडिट को डिफाइन करेंगे। वो एकेडमिक कोर्स हो सकता है, स्किलिंग कोर्स हो सकता है या एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो सकता है, जिसमें अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, फील्ड स्टडी, इसको भी काउंट किया जाएगा। अगर इसी वक्त आपके सामने मैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से लेके आपके सामने थोड़ा सा जोड़ दूं कि किन किन चीज़ों को फॉर इंस्टेंस एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी सिस्टम में इसको शामिल कर सकते हैं। मैं इससे पढ़ रहा हूँ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से आपके लिए। क्लासरूम टीचिंग, जो लेक्चरिंग आवर्स या और एक्टिविटीज होंगे, लेबोरेटरी वर्क, एग्जामिनेशन, क्लास टेस्ट भी टाइम इसमें शामिल है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिबेट्स एंड डिस्कशन, स्टोरी कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर कंटेस्ट्स जितने होंगे। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स, गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी, योगा होंगे। लाइफ स्किल्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट स्किल्स, सोशल एंड कम्युनिटी वर्क इंक्लूडिंग एनसीसी एंड श्रमदान, ये भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टेट्स में श्रमदान भी है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फील्ड विजिट्स, इंडस्ट्री अटैचमेंट, इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप, ब्लेंडेड ऑनलाइन डिस्टेंस, सेल्फ स्टडी एंड होम असाइनमेंट्स। होम असाइनमेंट्स इसमें भी शामिल होंगे, उसमें क्रेडिट हाउस होगा, उसके असेसमेंट भी क्योंकि इन्वॉल्व है। ये तमाम चीज़ें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, और चीज़ें भी हो सकता है, ये तमाम चीज़ें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में शामिल है और हर चीज़ का क्रेडिट देना जरूरी है। सो NEP 2020 क्या कहता है? तो उसके साथ नेशनल करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन NEP 2020. NEP 2020 talks about flexible curricular structures, which I have already talked about. Flexibility in terms of multiple entry and exit, multidisciplinary, almost 50% from discipline core and electives, and all 50% from outside discipline, but relating to the discipline maybe. But a student of physics could also take up a course in music. A student of dentistry could also take up a course in music. अगर उसको फायदा हो रहा है, that credit will be transferred to the dentistry, because music and dentistry or music and surgery, they are very highly related, or music and nursing, they are very highly related to each other. तो ये तय तो टीचर्स और स्टूडेंट्स बैठ के संस्था आपके करेंगे, आप इसको तय करेंगे. There is no compulsion that what kind of courses that the students will be taking. Students and teachers are free to decide and institutions are free to decide. और उसके साथ साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, सोशल एंड लाइफ स्किल्स, वोकेशनल एंड स्किल्स, जिसको हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं, वो तमाम चीज़ें 21st सेंचुरी स्किल्स में शामिल है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, डिजिटल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तमाम शामिल है उसमें. और उसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट शामिल है. कुछ आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज उसमें भी शामिल है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एंड लैंग्वेज लिबरल फाउंडेशन कोर्स इज कंपल्सरी इन NEP 20 अक्रॉस द बोर्ड, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ मेडिसिन, इंजीनियरिंग, IT, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, नर्सिंग, अब कुछ भी लीजिए. लिबरल फाउंडेशन, जिसको आप हैप्पीनेस स्किल कहते हैं, हैप्पीनेस स्किल इज ए कंपल्सरी स्किल टुडे. सो ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर. Relations between different subjects, because we have been confined to our own subjects, our own discipline. This is what is called a disciplinary blindness. Therefore, we need to go beyond the discipline. To give an example, इसको बुरा मत मानिएगा कि सिर्फ मैं इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन this is applicable to any kind of profession. Engineers today, but largely the companies, the business houses, the industries, they say we may not be able to employ all the engineers, because engineers do not have a holistic skill. They have engineering skill, but they do not have a holistic skill
which is 21st century skill, which will be required by us. So therefore, there is a need for widening the horizon in terms of subject area. So relationship between subjects, it talks about combination of core and application. It also talks about, on the one hand, if you are teaching any course, that could be divided between core and application. So core is your discipline core, and discipline core could be also applied. And NEP 2020 says that any course would involve 3 components: theory, practicum, and internship. These 3 components will combine together. They will define a course of study. So here I'm talking about core and application. Application would also involve critical thinking, discovery, discussion, analysis, inquiry-based learning of that particular course of your own discipline. Other than discipline, the student can also take 50% from outside the discipline. I'm talking about the discipline itself. So discipline, application for critical thinking, discovery, discussion, analysis, inquiry, and many more that you can think of. Combination of discipline and other courses, so other discipline skills, environmental education, value education, community, internship, research, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ. और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होगा, और सारे क्रेडिट स्टूडेंट रजिस्टर करेगा इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसका क्रेडिट्स रहेगा almost up to 7 years. अभी प्रावधान ये है, up to 7 years the credits will stand in the academic bank of credits. The student will decide कि मैं 50% कोर कहीं इंस्टीट्यूशन से किया हूँ और 50% और जगह से किया हूँ, और उसका क्रेडिट वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से स्टूडेंट का वो मेन इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर हो जाएगा. 50% joining together, the main institution will award the degree. So national curriculum and national credit framework 2020 जो सितंबर में रिलीज हुआ, अभी उपलब्ध है, चर्चा में है, आप सब लोग इसको पढ़िएगा. It talks about quite a few things. Equivalence of general and vocational education, provided the learning outcomes and competencies achieved so far are assessed at certain standards. कुछ standard defined है. I talked about 4 standards: professional knowledge, professional skills, core skills and responsibility, जो NSQF की तरफ जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उसको मान लिया है, तो उसके तहत डिफाइंड है. सो जनरल वोकेशनल एजुकेशन में इक्विवेलेंसी होगा, आपस में ट्रांसफर होगा, जनरल से वोकेशनल जा सकता है, वोकेशनल से जनरल रह सकता है, और जनरल वोकेशनल दोनों को साथ में लेके चलें. बाद में वन कैन डिसाइड वेदर आई कैन गो फॉर हायर स्टडीज इन जनरल और आई कैन गो फॉर वोकेशनल एजुकेशन. Based on measurable criteria, those criteria are accessible quantitatively and qualitatively, expressed in outcomes and competencies. So all the learning that you would like to transfer as credit, they should be expressed in learning outcomes and competencies achieved. With proper assessment strategy, multiple entry and exit, validation of alternative learning and home-based learning. Alternative schooling भी बातें कही गई है. दैट कभी कभी होम बेस्ड स्कूलिंग, ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग होता है, बच्चे घर में पढ़ते हैं, जैसे अमेरिका में होता है. बच्चे होम स्कूलिंग इज ए कॉमन थिंग इन अमेरिका. ये भी हमारे देश में आ रहा है कि अब मैं घर में पढ़ेंगे और उसकी क्रेडिट इक्विवेलेंसी एट स्कूल लेवल हो सकता है. यू कैन ट्रांसफर द होम बेस्ड लर्निंग क्रेडिट टू योर स्कूल and the school will exempt that credit because that is based on certain assessment, जो सभी के लिए बराबर है वो assessment. अगर आप assessment में पास करते हैं, there should be no reason why the credit should not be transferred from a home based or alternative learning including home based learning, and on the job training उसमें शामिल है. Distance online learning, digital learning उसमें बराबर शामिल है. Combination of, as I said earlier, academic, skilling and experiential learning. Experiential could be field-based, an apprenticeship. Experiential could also be on-the-job training like ITIs का मैं example दिया IGNO के साथ जो MOU हुआ है. So learning will be assessed based on 4 things that are listed here, which is from the National Credit Framework. First, learning outcomes or the competencies achieved. Second, the level of study, first year undergraduate, second year, third year, कौन सा level का course है. Third, there must be an assessment strategy which will assess and then declare that this is equivalent at this level of these many credits, 2 credits, 3 credits, 4 credits, 5 credits, 6 credits, whatever equivalent. What is a credit? I have already said. Credit, I will come to that. Credit in formal system is 1 credit, 15 hours of teaching. In distance learning, it is 30 hours of learning, students learning. I will extend that based on the National Credit Framework in the next PowerPoint.
एंड फाइनली एलोकेशन ऑफ क्रेडिट्स। ये 4 स्टेज पर फाइनल क्रेडिट एलोकेशन हो जाएगा। So now let us discuss 1 or 2 PowerPoints more, friends. Let us discuss what exactly is the calculation and how. And you have to read the document to go through the whole lot of tables to see that how the calculation has taken place and how these have been defined and how the competencies have been defined and how the assessment procedure is and how the credit transfer will take place. Now let us talk about credits and hours. Up to grade 5, 800 to 1000 hours of study in a year. इसकी तय हुआ है। जो स्कूल लेवल में ग्रेड 5 तक 800 से 1000 तक आवर्स ऑफ स्टडी। ग्रेड 6 onwards 1200 hours per year, which is applicable all through. So grade 6 up to PhD, that level, or at least master's level, 1200 hours a year. So 40 credits a year, that would simply mean in this case 1 credit is equivalent to 30 hours. So 1 credit 30 hours, 40 credits, 1200 hours per year. Face-to-face system में, distance learning में, we give more importance to self-study. Therefore, our credit already was 30 hours of student study. Face-to-face में 15 hours of teachers teaching और उसके साथ साथ मैं तमाम आपको पढ़ा उसको sports, ये activity, library activity, वो competition, तमाम चीज़ें co-curricular, extra-curricular activity उसमें भी शामिल होंगे जिसमें उसको credit मिलेंगे. So 40 credits a year, more than 1200 hours possible if a student is taking simultaneously 2 degrees. A dual degree is possible. Please go through the UGC regulation of twinning programs, dual degree and joint degree program, which is already available, that regulation. A student, हम IGNOU में कहा है कि एक student can take a dual degree if a student from outside is doing a degree can also take a degree from IGNOU through distance learning. If the student is taking up 2 programs of study from IGNOU through distance learning or online learning, the student has to give 1 semester gap. क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का दिक्कत होता है, अगर जनवरी साइकिल में एडमिशन लिया है, दूसरे डिग्री को जुलाई साइकिल में एडमिशन ले पाएगा। ये प्रावधान हमने फारिग कर चुके हैं। दिस इज a rule now at IGNOU. We have passed through our statutory bodies and this is applicable. So therefore 1200 घंटे का एक साल में स्टूडेंट को करना पड़ेगा 40 क्रेडिट्स, बट उससे ज़्यादा भी कर सकता है क्योंकि डुअल डिग्री अगर कर रहा है तो 1200 प्लस 1200 2400 क्रेडिट कर सकता है। थोड़ी देर पहले मैं आपको कहा कि गिफ्टेड स्टूडेंट या 1200 क्रेडिट को कम टाइम में कर दें, आप उसको क्रेडिट ट्रांसफर करें। ये भी हो सकता है 3 साल का अंडर ग्रेजुएट 2 साल में कंप्लीट करें, या एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं 2 डिग्री कर रहा हूं, 1200 प्लस 1200 2400 कर रहा हूं एंड आई कैन कंप्लीट बोथ द डिग्रीज। ये भी प्रावधान है, मान्यता है, गारंटीड है, लीगल है। सो 1 आवर्स कैसे होगा, डिफाइन होगा। अगर 1 घंटे का थ्योरी है, 1 आवर्स ऑफ थ्योरी विल बी 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड विच विल बी इक्विवेलेंट टू 3 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंशियल फील्ड ट्रिप या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऑन द जॉब एक्सपीरियंस जो क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहता है। मैं ITI का एग्जाम्पल आपको दिया। सो 1 आवर्स ऑफ थ्योरी, 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल like laboratory, science practical for instance, and 3 hours of experiential learning, इसकी equivalency होगा। So finally friends, 2 PowerPoints that ये आपके सामने final credit formulation आपकी है, जो National Credit Framework, National Education Policy 2020 और National Higher Education Qualifications Framework 3 को शामिल करता हुआ आपके सामने है। So एकेडमिक लेवल में आपको कहा था 4 से 4 तक स्कूल का है, उसके बाद शुरू हो जाएगा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का। सो 8 लेवल ऑफ क्रेडिट्स हैं, 4 लेवल ऑफ क्रेडिट आपके स्कूलिंग में चला गया और 4.5 इज अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर, या आप उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कहेंगे। अगर वो 40 क्रेडिट लेके फारिग हो जाता है, काम में लग जाता है, फिर वापस आएगा तो उसको आप अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट देंगे। जो 40 क्रेडिट से होगा उसका क्रेडिट पॉइंट्स कितना अर्न होगा, क्रेडिट पॉइंट क्या चीज है, दैट द क्रेडिट्स अर्नड इन दिस केस 40 मल्टीप्लाइड बाय द क्रेडिट लेवल दैट इज 4.5। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 तो उसको 180 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेगा। आगे जो आगे चलेगा तो उसके क्रेडिट पॉइंट्स आगे चलेंगे। क्रेडिट तो अर्न किया है, क्रेडिट तो ट्रांसफर भी हुआ है, उसके क्रेडिट पॉइंट्स आगे चलेंगे। सेकेंड,
सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट जिसको आप डिप्लोमा दे सकते हैं या इंजीनियरिंग डिप्लोमा दे सकते हैं। जो ITI पॉलिटेक्निक से आए हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा, तो वो लेवल 5 होगा, वो भी 40 क्रेडिट्स होगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 40 200 क्रेडिट पॉइंट्स। अंडर ग्रेजुएट लेवल 3 अंडर ग्रेजुएट डिग्री देंगे या बी वोक देंगे जो 3 साल का है, या BSc इंजीनियरिंग देंगे। ये सब 40 क्रेडिट्स मल्टीप्लाइड बाय 5.5 220 क्रेडिट पॉइंट्स पर ईयर वो लेगा। सो अब देख रहे हैं फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट में उसको 180 पॉइंट मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 200, थर्ड ईयर में 220। तो क्रेडिट पॉइंट डिफरेंट है बिकॉज लेवल डिफरेंट है। फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट करेगा या अंडर ग्रेजुएट डिग्री आप उसको देंगे विद रिसर्च कहला जाएगा, या पोस्ट ग्रेजुएट का MA का MSc का फर्स्ट ईयर करेगा, या उसको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी आप कह सकते हैं। BTech या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी ये इक्विवेलेंट है जो लेवल 6 है, 40 क्रेडिट्स, देयरफॉर 240 क्रेडिट पॉइंट्स। पोस्ट ग्रेजुएट ईयर 2 MTech का फर्स्ट ईयर कहला जाएगा, मास्टर इन MVoc या MSc इंजीनियरिंग उसका फर्स्ट ईयर ऑफ MSc इंजीनियरिंग, दिस आर ऑल इक्विवेलेंट। सो 40 क्रेडिट्स बट उसका लेवल 6.5, देयरफॉर वो 1 साल करने के बाद उसको 260 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। MTech ईयर 2 MSc इंजीनियरिंग ईयर 2 7 लेवल है, 40 क्रेडिट्स, हायर लेवल हो गया तो 280 क्रेडिट मिलेंगे। PhD जो करेगा पर ईयर 40 क्रेडिट है पर ईयर, बट वो लेवल 8 है, उसके लिए 1 साल का उसको क्रेडिट पॉइंट 320 मिलेगा। सो आप इसमें देख पा रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स में क्रेडिट पॉइंट्स जो बन रहे हैं और लेवल के हिसाब से बन रहा है, बट 40 क्रेडिट्स ए ईयर इज कांस्टेंट। फाइनली फ्रेंड्स, कैसे तय होगा कि आप जो काम कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे ट्रांसफर होगा? तो 4 तरह के लेवल तय किया गया है कि आपकी कॉम्पिटेंसी। ट्रेंड जो बेसिकली ट्रेंड है, अभी काम में लगा है। प्रोफिशिएंट जो बेहतरीन ढंग से कर पा रहा है। एक्सपर्ट जो उस लाइन में हेड कर रहा है, और मास्टर्स जो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ जो क्रिएटिविटी इनोवेशन भी कर रहा है। सो 4 लेवल ऑफ जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जो काम कर रहे हैं, तो क्रेडिट ट्रांसफर जिसको कहते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, उसका है, उसको ट्रांसफर करना चाहेगा तो कैसे कैलकुलेट होगा क्रेडिट पॉइंट्स। नाउ ट्रेंड लेस देन ए ईयर, उसको आप ट्रेंड कहेंगे, क्रेडिट पॉइंट 1 मिलेगा। 1 to 4 years जिसका एक्सपीरियंस है, आप प्रोफिशिएंट कहेंगे, उसको 1.33 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा जो कोर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, विच विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल एजुकेशन ऑल्सो। एक्सपर्ट जो है 4 से 7 साल काम किया है, 1.67, और जो मास्टर से 7 साल से ज़्यादा किया है तो 2 पॉइंट उसको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आई स्टॉप हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, we will try to respond to your questions as far as possible. Thank you. Thank you, sir, for this very informative and very interesting discussion in which you covered, gave a very good overview of the national education policy, as well as you have also covered the national skills qualification framework and the national higher education qualification framework, and also the national school education qualification framework. So there are a few questions that I would like to ask. One is, how will the academic bank of credit function and what is to be done for its implementation successfully? You see, academic bank of credit तो बन गया है, वो एक बैंक के खाते की तरह है, तो आपकी संस्था उसमें रजिस्टर करेगा। संस्था रजिस्टर करने के बाद हर स्टूडेंट जो है 2022 से उसको रजिस्टर करना चाहिए, कि जब तक वो रजिस्टर नहीं करेगा तो उसकी जो क्रेडिट अर्न होंगे कोर्स वाइज, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा, उसकी क्रेडिट आप कंसिडर करके उसको डिग्री दे सकते हैं, लेकिन वो क्रेडिट ट्रांसफ़र और क्रेडिट एक्युमुलेशन और स्टूडेंट का जो फ्रीडम है, मैं कितना क्रेडिट को कहाँ यूज़ करूँ, वो फ्रीडम सब खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी में दूसरे संस्था से वो क्रेडिट लेंगे वो भी तो एकेडमिक क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट के माध्यम से होगा। तो इसलिए उनके जितनी क्रेडिट एक्युमुलेशन होंगे, आपकी क्लासरूम टीचिंग दूसरे संस्था से ले रहे हैं, डिस्टेंस ऑनलाइन लर्निंग से कोर्स ले रहे हैं, स्वयं से ले रहे हैं, अब उसके सारे जो क्रेडिट्स हैं कोर्स की वो खाते में चले जाएंगे बैंक में उन्हीं के नाम पर। तो वो उसी को शामिल करते हुए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री उसको ले सकते हैं, जो 7 साल के लिए एक क्रेडिट उसमें रहेगा। 7 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है 7 साल से पहले या 7 साल के अंदर उनको क्रेडिट को यूटिलाइज करना चाहिए। वो फिर फॉरफिट हो जाएगा, उसको रिडीम करना चाहिए जैसे बैंक में करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो आपकी संस्था और आपके स्टूडेंट्स वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में शामिल हो। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपकी डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिनरी, लाइफ स्किल्स, सोशल लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, आर्ट एंड लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें जो है ये उसमें दैट विल ऑल्सो डिफर फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन लाइक इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड सो ऑन, सभी के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। तो उसमें ये कोर्स का कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन मीन्स अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ द कॉम्पिटेंसी, जिसको क्रेडिट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको आप कोर्स क्रेडिट कहेंगे, कोर्स पास किया जिसको कहेंगे, वो क्रेडिट उसका बैंक ऑफ क्रेडिट में रहेगा और स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, फ्रीडम रहेगा कि वो क्रेडिट को किस तरह उसमें कहाँ यूज़ कर सके। मान लीजिए कि स्टूडेंट एक 8 क्रेडिट या 12 क्रेडिट या 16 क्रेडिट तक मान लीजिए अगर प्रावधान है, वो म्यूज़िक में कर लिया और कुछ डिसिप्लिन पढ़ रहा है, बाद में डिसाइड करेगा मैं म्यूज़िक में करियर बना सकता हूँ, तो म्यूज़िक का वो 16 क्रेडिट उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा और कुछ एडिशनल क्रेडिट करके वो म्यूज़िक का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री लें और म्यूज़िक में करियर बनाएं। तो ये प्रावधान है। सो मल्टी डिसिप्लिनरिटी, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट एंड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट साथ चल रहे हैं। और इसमें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो आ गया सभी चीज़ को मान्यता दे रहा है बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जिसको आप एग्ज़ाम कहते हैं। तो उसमें असेसमेंट का तरीके बदल जाएंगे। वो जो पुराने एग्जाम स्टाइल चलते थे वो काफ़ी चीज़ें बदलाव होगी और जिसके बेसिस पर NAAC जैसे संस्था, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल या नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जिसको करते थे, वो भी उनके प्रावधान चेंज हो जाएंगे बेस्ड ऑन द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और फाइनली जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, वो देश के लिए एक क्रेडिट फ्रेमवर्क हमारे सामने आ गया है। So therefore this will subsume all the credit frameworks, NSQF, National Higher Education Qualifications Framework, जो AICT का था, जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, स्कूल एजुकेशन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी क्रेडिट फ्रेमवर्क है, तमाम चीज़ों को और उसमें शामिल होगा। इसमें बहुत फ़ायदा होगा संस्था को और स्टूडेंट्स को। थैंक यू सर। एक और सवाल है, in the context of national education policy, what do we mean by multidisciplinary and how will credit framework work in this context? You see, जिसकी हम चर्चा किए हैं थोड़े बहुत कि मल्टीडिसिप्लिनरी में जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को ले लीजिए, हाल ही में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करिकुलम फ्रेमवर्क यूजीसी ने जारी कर दिया। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तमाम तरह की डिफरेंट लेवल्स की, अभी लेवल्स के हम क्रेडिट का आप समझ गए होंगे, लेवल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और उसमें और भी लेवलिंग होगा जब आप आउट ऑफ द क्लासरूम एजुकेशन या एक्सपीरियंस को ट्रांसफ़र करेंगे। और किसी ने कहीं काम किया है, 6 महीना काम किया है, उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है, जैसे हॉस्पिटलिटी में काम किया है वो, तो हॉस्पिटलिटी का एक्सपीरियंस को ट्रांसफ़र हॉस्पिटलिटी के डिग्री की तरफ करना चाहता है, तो वो भी एसेस होकर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब ये हुआ, अपने डिसिप्लिन का कोर एंड इलेक्टिव, ये तो ऑलमोस्ट 50%, कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डिसिप्लिन एरियाज एंड रेगुलेटर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलमोस्ट डिसिप्लिन कोर एंड इलेक्टिव जो है वो आपका 50%, ऑलमोस्ट 50% विल गो टू सोशल एंड लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, अप्रेंटिसशिप, रिसर्च स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सारे कंपलसरी है। सो एक ये कोई डिसिप्लिन रिलेटेड भी हो सकता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी एंगेजमेंट कुड बी रिलेटेड टू सोशल वर्क, इट कुड बी रिलेटेड टू एजुकेशन, इट कुड बी रिलेटेड टू मैनेजमेंट, इट कुड बी रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंस, इट कुड बी रिलेटेड टू एनी डिसिप्लिन। कम्युनिटी एंगेजमेंट तो इसे कोई खड़ा नहीं है ना,
कम्युनिटी में आप जब काम करेंगे, अपने डिसिप्लिन के तहत प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई फील्ड स्टडी करेगा तो उसमें काम करेंगे। सभी लगभग समझिए या डिसिप्लिन या कोई अदर डिसिप्लिन या इंटर डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन या इंटर डिसिप्लिन में जोड़ा हुआ है। आउटसाइड डिसिप्लिन कुछ नहीं, डिसिप्लिन शब्द कोई हटा नहीं रहा है। इट इज डिसिप्लिन, इंटर डिसिप्लिन एंड मल्टी डिसिप्लिन। तो उसमें तो कोर्स उसको लेना पड़ेगा, तो चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग से ले, ऑनलाइन ले, स्वयं ले, या जिसको बात किया गया है क्लस्टर कॉलेज, कि एक ही शहर में अगर 2, 3, 5, 7 कॉलेज हैं, वो आपस में अंडरस्टैंडिंग करें कि मेरा स्टूडेंट वो कोर्स मेरा कॉलेज में नहीं है, आपकी कॉलेज से ले सकता है, प्रोवाइडेड उसके जो टाइम टेबल क्लास ना करता हो, ये मॉर्निंग में वो इवनिंग में वहाँ से कोर्स लग सकता है। कोर्स उसका क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में चला जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से अपना जो कॉलेज है उसको डाउनलोड करेगा, कहेगा हमने उसको शामिल किया, और वो सब स्टैट्यूटरी बॉडी अपने फॉलो करेंगे, अपने एकेडमिक काउंसिल, स्कूल बोर्ड, बोर्ड्स ऑफ स्टडीज इसमें फॉलो करेंगे। सो मल्टी डिसिप्लिनरिटी, एक तो होलिस्टिक एजुकेशन, एक अपनी कॉम्पिटेंसी आउटलुक उसको 21st सेंचुरी स्किल को बढ़ावा देता है, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाता है, और इंसान का अपने जीने का जो तरीके हैं, ऑलमोस्ट आज की तारीख में हम सब रोजी रोटी के लिए पढ़ रहे हैं, जीवन जीने के लिए कहीं हमको पढ़ाई नहीं है। देयरफॉर ये जो हैप्पीनेस स्किल है, जैसे फॉर इंस्टेंस दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट ने हैप्पीनेस करिकुलम चलाया है, तो विच इज बिकमिंग ग्रेजुअली फेमस, and many universities have already started happiness curriculum. NEP-2020 talks about happiness curriculum under social and life skills, जिसको आप 21st century skills कहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल है। तो एक तो होलिस्टिक बना रहा है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयबल बना रहा है, और दूसरे डिसिप्लिन के बारे में जानकारी भी रखने के लिए, और तीसरा जो NCF नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क कह रहा है कि आप बाद में अपनी लाइन ऑफ डिसिप्लिन जो है, जिसको आप लेके कोर्सेज ऑफ स्टडी पढ़ रहे थे, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, समबडी फ्रॉम फिजिक्स कैन आल्सो गेट इनटू म्यूजिक इन फ्यूचर एज अ कोर्स ऑफ स्टडी। Thank you, sir. In the multidisciplinary setup, how can teaching learning or blended learning take place? इसी उसमें भी शामिल है जो बात कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन तो मल्टी डिसिप्लिनरी करिकुलम एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी, टीचिंग, लर्निंग, पेडागॉजी, असेसमेंट है। उसमें जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरा मान्यता दिया है, और उसको ज़्यादा मान्यता मैं समझता हूँ दिया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो अभी हाल ही में जारी हुआ। उन्होंने क्लियरली लिखा है, जो मैं थोड़ी बहुत जिक्र किया इस प्रोग्राम में, उन्होंने क्लियरली कहा है कि एनी काइंड ऑफ डिलीवरी मोड और एनी काइंड ऑफ लर्निंग, डिलीवरी मोड कैसा, फेस टू फेस, ऑनलाइन, डिस्टेंस और ब्लेंडेड, ये डिलीवरी मोड हो सकता है। 3 तरह का ब्लेंडिंग की मैंने बातें किया कि फेस टू फेस, सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग। फेस टू फेस हैंड्स ऑन ज़्यादा हो सकता है, सेल्फ स्टडी थियोरेटिकल कोर्स पढ़ सकते हैं विद मेंटरिंग सपोर्ट, और थर्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसमें पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स ये सब मिलके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पॉसिबल है। ये दूसरी तरह का हो गया। और तीसरी तरह जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, इन दोनों में भी कॉम्बिनेशन, और NCF जो अभी आया है, दिस टॉक्स अबाउट फुल गारंटी ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी और इक्विवेलेंसी, और उसके बाद आपस में ट्रांसफर। Somebody can shift from general to vocational education, somebody from vocational to general education. लगभग फर्स्ट ईयर के बाद they have to decide that which line we have to proceed. So therefore आप ये जो करिकुलम है इसको आप 3 तरह का ब्लेंडिंग माध्यम से, ब्लेंडिंग तो करना ही पड़ेगा। Today 40% of SWAYAM courses a student can take. That means 60% is face-to-face teaching. कोई डिग्री आज की तारीख में फुल face-to-face डिग्री नहीं है अगर इन प्रिंसिपल देखा जाए। So it is a blended degree. हम इसको डिस्टेंस डिग्री कहते हैं, आप फेस टू फेस डिग्री कहते हैं, बट ऑल आर ब्लेंडेड डिग्री। हमारा भी फेस टू फेस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है। सो फार रेगुलेटर का कहना है कि जो स्किल कोर्सेज होंगे उस स्किल को आपको फेस टू फेस हैंड्स ऑन देना पड़ेगा। तो हमारा तो हैंड्स ऑन स्किल के लिए कंपलसरी कम से कम हुआ। सो देयरफॉर द डिलीवरी मोड्स एन इंस्टीट्यूशन कैन डिसाइड कि साहब हम कुछ परसेंटेज ऑफ क्रेडिट्स वी कैन गिव फॉर सेल्फ लर्निंग, large percentage you can decide face to face, including lecturing, discussion, this and that, including hands-on, laboratory and skill-based, and online collaborative learning. या आप कह सकते हो एक student up to certain credits one can take online
from somewhere else. From IGNOU, why not? To take online, even an online program you can take simultaneously, dual degree, but online courses you can take. You can also say that the student can take certain credits from SOIL, for instance. तो इसमें जो curriculum multidisciplinarity, multiple entry and exit और डाइवर्सिफाइड डिलीवरी मोड्स जिसको आप ब्लेंडेड लर्निंग करते हैं वो आपस में जोड़ गए और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इसको पूरा जोड़ दिया. Thank you, sir. The last question for the day. This is in the context of the credit framework. How can we combine the general courses with the vocational courses? इसी जो जनरल और वोकेशनल कोर्सेज हैं, थोड़ी बहुत वोकेशनल कोर्सेज के बारे में आपको आगाह कर दूं. हमारे किस ज़माने में था, स्कूल में एक वोकेशनल कोर्स आप लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, पेपर लेंगे, वो वोकेशनल स्टैंड अलोन होगा, वो आपकी डिग्री में या ग्रेड में स्कोर में शामिल नहीं होता था. एक ज़माना था. एक ज़माना फिर आया कि साहब आप ग्रेड 8 के बाद और ग्रेड 10 के बाद आप ITI जा सकते हैं. एक ज़माना आया, वो भी अभी भी चालू है. और तीसरा एक ज़माना आया कि पैरेलल स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम चालू हो गया, जिसको करने के बाद आप BVoc कर सकते हैं. BVoc के साथ साथ स्किल यूनिवर्सिटी है, आप मास्टर्स इन स्किल कोई भी एरिया में आप कर सकते हैं. आज की तारीख में नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत NSQF के तहत जो 10 लेवल का था, इस वक्त नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 8 लेवल में रिड्यूस किया, जो सबको मान्यता होगा, इंक्लूडिंग NSQF को भी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किलिंग का, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्किलिंग का है. NCBET इसको बनाया है. तो जो मान्यता होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो स्किल है, स्किल बेस्ड कोर्सेस हैं, तो स्किल बेस्ड कोर्सेस में एक पैरेलल बना सकता है. somebody who is a primary equivalent in plumbing, who is an elementary equivalent in plumbing, secondary in plumbing, senior secondary in plumbing, undergraduate in plumbing, postgraduate in plumbing and a PhD in plumbing. ये आज की तारीख में which is internationally equivalent, उसका जो रूब्रिक है, मैं जो पढ़ रहा था आपके NSQF, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये डिफाइंड है. तो दिस इज इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव. दैट मीन्स ए प्लम्बर who is doing an undergraduate or postgraduate or PhD in plumbing is transferable anywhere in the world because he is equivalent or she is equivalent anywhere in the world. So therefore, vocational education and general education parallel stream चल रहे थे. लेकिन ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आया, इन दोनों को शामिल किया. द स्टूडेंट के पास चॉइस है, प्रोवाइडेड दे आर टीचर्स और somebody can take through distance learning, online learning or some other institute in the same college within the same city. ये सब क्लस्टर कॉलेज के तहत ये प्रावधान है. So therefore, to conclude this point, that जनरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन में इसी वक्त नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत 100% ट्रांसफरेबिलिटी है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस. आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट. इक्विवेलेंस एस्टैब्लिश होगा, किस लेवल का होगा, और लेवल को कैसे असेस करेंगे, लर्निंग आउटकम एंड कॉम्पिटेंसी अचीव्ड. कॉम्पिटेंसी विल इंक्लूड थ्योरी, प्रैक्टिकम, इंटर्नशिप, ऑल काइंड्स. Competency doesn't mean only psychomotor domain competency. Creativity is also competency. Let's not mistake it. Some people argue against competency. This is a competency-based education. Creativity is also competency. Research, investigation, skill, scientific discovery, scientific process of investigation is also a competency. And articulation, significant in social science, significant articulation at a very high order metacognitive level learning, for instance, high order learning is a competency. So creativity, innovations are also competencies. So therefore general vocational education में student के पास रहेगा कि general और vocational courses को भी शामिल कर सकता है, interchange कर सकता है, credit transfer कर सकता है, और जो काम किया है on the job training या काम किया है, कहीं नौकरी किया है, अगर उसी लाइन में रिलेटेड है और उसको वो असेसमेंट के सामने रख सकता है, मेरे असेसमेंट किया जाए. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL. वो सामने रखेगा, मैं 6 महीना या साल का काम किया हूँ, मेरे को नापा जाए, मेरे को असेस किया जाए. अगर असेसमेंट में आपको जितना क्रेडिट शामिल होगा उस लेवल में, वो क्रेडिट आपको ट्रांसफर होगा. तो ये तमाम प्रावधान जो है जनरल और वोकेशनल एजुकेशन जो दो पैरेलल सिस्टम थे, वो आज की तारीख में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी में, ये दोनों शब्द पहले इस्तेमाल नहीं किया, तो आखिरी कर रहा हूँ, जो नेशनल करिकुलम क्रेडिट फ्रेमवर्क इसको इस्तेमाल किया है, जो हम बहुत पहले से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोबिलिटी नहीं हो पा रहा है. सो देयरफॉर टू कंक्लूड दिस पॉइंट, आज की तारीख में नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोबिलिटी बिटवीन हायर एजुकेशन और जनरल एजुकेशन
and vocational education is possible. उसके साथ आपके informal learning, जैसे मैंने पहले बात किया, और on the job training या आप जो काम कर रहे हैं, that work experience इसमें भी शामिल हो गया. So all the four, at least three I have talked about, that general education और academic education, skill based education and experiential learning, ये तीन शब्द इस्तेमाल किया है National Credit Framework 2022. So friends, thank you very much for this listening, and I hand over to Dr. Tirkey to finally conclude. Thank you very much. Thank you, sir. I would like to inform everybody who's online that immediately after this session, there will be two videos which will be continued. One on National Education Policy by Professor Kasturi Rangan, and then Role of Policy in Higher Education by Dr. Ramchandra. And I would further like to make some announcements with regard to the NEP-PDP program that is going on. The SWAYAM platform that we have, it has 4 modules and there are 14 units which you can access from the link. And there are 30 videos already available on the SWAYAM platform, which I would encourage everybody, हमारे जितने भी लोग इसमें enrolled हैं, सबको इस यहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं, उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. और यहाँ पर हमारे जो प्लेटफॉर्म है इसमें डिस्कशन फोरम भी है, जहाँ पर आप अपनी राय रख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं. और हमारी जितने भी सेशंस हैं, ये जैसे अभी जो लाइव सेशन हो रही है, इसके अलावा जो पहले भी लाइव सेशंस हुए हैं, वो सब हमारे यूट्यूब चैनल में, COE लाइव चैनल में उपलब्ध हैं. अभी तक 8 बैचेस हो चुके हैं, जिसमें 48 इस तरह के COE लाइव वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, जहां से आप प्रीवियस वीडियोस से भी और भी दूसरे टॉपिक्स पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. और मैं बताना चाहूँगा कि 6 दिन के बाद, यानी ये प्रोग्राम जैसे 6ठा दिन के बाद आपको MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए खुल जाएगा, जिसमें 30% का वेटेज है. उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए और उस क्वेश्चंस को आंसर करिए, जिससे कि आपको स्कोर मिलेगा. स्वयं में जरूर आए, और स्वयं में एंटर करें. जी, स्वयं में ज़रूर एंटर करिएगा. और टर्म एंड एग्ज़ाम में 70% का वेटेज है. उसमें आपको आंसर करने से आपको वेटेज मिलेगा, और ओवरऑल आपको 50% स्कोर करने से आपको सर्टिफिकेट अवार्ड होता है. तो ये है आज की ये जानकारी है. और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी जानकार हैं, जितने भी आपके सहकर्मी हैं, जो टीचर्स हैं, उनको आप इनकरेज करिए कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये प्रोग्राम का फ़ायदा उठा सकें, इसमें एनरोल करें. तो ये कहते हुए मैं आज का ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहूँगा. धन्यवाद. नमस्कार.
Now, before I start with the actual presentation of the policy itself, I will spend a few minutes with respect to the relevance of education in the present context. A lot of things have been asked to me in public with respect to why at this time an educational policy, what kind of relevance does it have in the context of India and the context of the global developments. And always you have to articulate some aspects of it. Of course, first we all recognize there's more than 3 decades since we had the last one, and there are several developments that have happened. India, of course, will have the highest population of young people in the world over the next decade, and we recognize that nearly 50% of the population will be below 35 years of age, aspiring for high quality education. This democratic dividend certainly has to be taken advantage of. I don't think we have discussed it in several platforms. We have debated it, and certainly this is a direction and aspiration for the country which we have to realize. Globalization and demands of a knowledge economy and knowledge society call for emphasis on the need for acquisition of new skills by learners on a regular basis for them to learn how to learn and become lifelong learners, a critical consideration to be addressed appropriately. And that is where this education policy certainly has focused on. Changes in knowledge landscape, especially science and technology, I don't have to say here, but advances in big data analytics, machine learning, artificial intelligence, all demand skilled workforce involving mathematics, computer sciences, data science, as well as multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences, and humanities. The education of future need to be reconfigured in order to meet the goals of the global education development agenda. We are a part of that. The goal 4 of the Sustainable Development Goals 4 of 2030 that seeks to ensure inclusion and equitable quality education and promote lifelong learning for opportunities for all. So this is broadly just to give it kind of a flavor of the kind of consideration probably the people who matter in terms of defining when to come out with a policy thought about. Now, how did we go about? A little bit of that also is of interest for the audience here. The process, of course, was that we had the members of the policy committee with the government set it up. And then we had a members of a drafting committee. We thought that besides the policy framing, we also need to bring it up in a way in which it can be presented. We had a special drafting committee. It had members of the policy committee also. And then we had a set of members, experts, who provided a kind of a technical secretariat support for doing this. And not to be satisfied with it, this is where I have my own strong views. The question of being independently evaluated with respect to the type of presentation we are making, ideas that we have created, and the strategy we have crafted. We put certain peer reviewers, people who are away from the policy formulation, who are very well aware of the kind of educational system, the academic system this country over the years, and therefore competent enough to give us very vital inputs about the first level of drafting this policy. So there were peer reviewers here. Discussions and consultation, we went through a even though this particular policy was initially having a basis of previous policy document, in fact, 4 years of work, very intense work had gone through in the formulation of this policy earlier itself. Documentation from downward consultations were there, submissions from individuals and groups were there. So there was the previous Honorable Minister of Education. We had also the TSR Subramaniam Committee and many others. So we had many things to fall back on. The question was to review them, to adopt them, and to see where we need to move extra efforts. And that is where we saw that discussions and consultations with the different stakeholders, including organizations, institutions, and individuals. We had quite a number of inputs which were new, which had very unique in terms of things which were not earlier presented or considered for discussion. And of course, when everything was ready and when we made an initial presentation to the ministry, they felt that ultimately to go into the public domain is a national, very important national document. We need to get the public responses of what they are in for the future of education. We got more than 2.5 lakh responses from both from the school and the college education, higher education point of view. So that was another major thing. We went through a consultation with the state educational authorities, including in many of the states, we had also consultation with the state ministers.
And then we had a review, so that when the policy was in the near final stages, the number of reviews were conducted by the Honorable Prime Minister himself. In fact, he went through every aspect of the policy and every items of the policy, and he wanted to make sure that there is a level of pragmatism and the ability to carry this forward in the implementation domain. So this is one of the important things that the Honorable Prime Minister, he came out with several interesting suggestions also, I should mention. So that is the other part of it. And finally, we got the cabinet approval on the 29th of July 2020. Immediately following that, for a number of measures, the first and foremost was to make sure that there is a very intense familiarization process for this. So major conferences with chancellors, vice chancellors, directors of higher education institutions, other high-level functionaries were convened. These are meetings convened by UGC and Ministry of Education and addressed by Honorable Prime Minister and His Excellency the President of India. So these were kind of things that were also carried. This also underscored the importance at the highest level that they attach to the policy. And now we are in the stages, and I will say at the end of my talk a little bit about how the concerned agencies and the ministry is moving towards the implementation. Now, to just give a framework for the policy provides an integrated and flexible approach to education. It has kept the interconnectedness, the various phases of education in mind, and how the same will enable continuity, coherence, and processes to ultimately realize an end-to-end educational roadmap for the country. An articulation of a broad view of education encompassing the holistic development with special emphasis on kindling of the creative potential of each individual in its richness and complexity has grown increasingly popular in the recent years, several domains of discussions. The policy thus aims to have it aims at the development of the 21st century skills. I don't have to re-emphasize what these 21st century skills are here for the students while giving them the flexibility, making choices consistent with the dynamics of a knowledge society. Before we go straight into the higher education and go into the details of the same, a little bit about the connection between the school education and the higher education. We do recognize, all of us, and the policy does so, the interconnectedness of the various phases of education. I mentioned it earlier. School education is of intrinsic importance, there's no question. How a student experiences the schooling phase of education could have a significant influence on those subsequently pursue higher education, including professional and vocational, besides, of course, helping to lay the foundation for lifelong learning. So keeping this in mind, I'm trying to first put the overall policy element, the element that is gone into the policy as a part of the academic side, not just on the governance and other areas. We have the early childhood care and education, home education, Anganwadis and preschools. One of the very key elements, because we did make transformatory recommendations in the context of the early school education. I will say a few words about it in the subsequent projections. And right now it is divided over a 15-year period of foundational, preparatory, middle, and secondary. We'll see the details of that. On the higher side, of course, we have the undergraduate, general education, teacher education, professional and vocational to focus a little bit. And then we have the postgraduate, masters, and PhD, need not be emphasized here. And ultimately, a national research foundation, a unique institution that will spur the research, and particularly in the educational institution and university system particular. And then, of course, we have areas like lifelong learning, adult education, and many other areas that have been also including the use of technology for education. These are all part and part of. So this is just the broad elements of the policy which you have touched upon in the policy. And I will, of course, as requested, I will try to concentrate on the higher education, but not before saying a few words about the kind of things that we have thought about in bringing the school education to a new domain. The extent 10+2 structure is what the early school education will be. It will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5 plus 3 plus 3 plus 4, covering the ages 3 to 18. I have shown it here in terms of 4 levels. The foundational level, where the policy, this is the education starts, unlike at 6 years, now it starts at 3 years. 3 to 8 years is what we characterize the first 5 years as the foundational
phase of the school education, 3 years of pre-primary, preschool, and then we have a primary education, which is first and second class, the grades. So you have the 5 years here. What is important in this phase, which will take you up to the age of 8, is the fact that the policy recognizes the individual differences in the cognitive development of children at this stage, and therefore formal structured learning will be absent during these 5 years. So the important thing is that each child has to be evaluated with respect to its growth of the brain, and these are not uniform, so there is no linear pattern in which the growth occurs. And it's also important that 85% of the brain virtually is matured by the age of 8. So we need to make sure that the learning process is suitably adopted, that maximal advantage of this kind of a pattern by 85% by the age of 8 is whether it is language learning, whether it is literacy and numeracy. These are all critical elements in this phase of the foundational phase of the school education. This you carry forward a little more from unstructured, you go into the curricular structure in the next 3 years, that is from age 8 to age 11, where the curricular structure and standardization can be slowly introduced. And carrying this forward for the next 3 years, you virtually go into subject areas. You have a teacher children student interaction much more effectively, and also have the capacity for abstraction, because that is something which was in the earlier two phases much less because of the nature of the brain growth. And lastly, we have the secondary education, the last 4 years of school education, ages 14 to 18. There will be multidisciplinary orientation with exit options. This is the phase that will prepare the student for undergraduate program. And that's why I'm coming to this, because undergraduate program is very much related to the kind of orientation in the policy that we have tried to create in the secondary level of the school education, including early introduction of liberal arts education. So this is the kind of a thing. Of course, you have vocational education here, you have the exit option here. If you want to leave at the age of 18, the school education and take up some kind of a job, there are enough provisions for that, enough training and other kinds of things. In fact, we have recommended that we need to have a youngster who knows at least one vocational area thoroughly, 100% in by the time he leaves the school, that kind of a thing. And the first 4 elements of the vocational education in the overall scheme is a part of the secondary and part of the middle as well as the secondary education. So this is the broad thing. I thought I wanted to emphasize this mainly because these are the times in the we understand today the neural sciences and the kind of cognitive science which dictated this study of creating a policy around the present understanding of the brain and its growth. And I thought I should bring it to the attention of this erudite audience. And this is just to give you an idea of a brain, how critical it is to make sure that we make use of the brain and its stimulation, the early phase of the child's growth. And one can see very clearly the cognitive stimulation, what it does to the brain, to a case where such a simulation has not occurred. We can very clearly see the temporal lobes, how different they are in terms of its growth and maturity, and which essentially means how much you take advantage of the pattern of the brain growth in terms of the learning process and also the teaching process. Now, having said all this with respect to the school education, we move over to the undergraduate education, part of the higher education. What the policy does is to promote a holistic. We have made a broad approach which is holistic and multidisciplinary at the undergraduate level. And this is something which is not new to this audience, and especially I don't know IIT Delhi's some of the very early efforts in the context of holistic and multidisciplinary education. They generate more imagination and creativity in the student to ensure their all-rounded development. And of course, the concept which we today term as a liberal education, which is really multidisciplinary and holistic, is an age-old idea in the Indian context. I don't have to say this again. The Banabhatta's Kadambari, which is considered a person was recognized as truly educated when he mastered the 64 kalas encompassing music, dance, painting, culture, languages, and in addition to subjects such as science, engineering, and mathematics, as well as vocational subjects. Liberal education explores the remarkable relationships that exist among the sciences and humanities, mathematics and arts, medicine and physics, etc., and more generally,
the surprising unity of all fields of human endeavor. A comprehensive liberal education develops all capacities of human beings: intellectual, aesthetics, social, physical, emotional, and moral in an integrated manner. So, this is the approach, and this is the one we have tried to translate into the policy as a crucial step to lead India into the 21st century. The fourth industrial revolution, multidisciplinary education is central. Even engineering schools, I know IITs following this, in this case, will move towards more holistic multidisciplinary education with more arts and humanities, while arts and humanities students will have to learn to aim more science, while all will try to make an effort to incorporate more vocational subjects and soft skills. India's rich legacy, I mentioned about Bhanabhatta's work and many other kind of work subsequently in the arts as well as in sciences and beyond, will significantly help in making the move towards such an education, hopefully an easy and natural transition. Now, how is it that the policy has put that in concrete terms? Liberal education with broad multidisciplinary exploration, it has to be an imaginative and flexible curricular structure, creative combinations of disciplines of study. This has been chosen, whether it's arts, crafts, sciences, mathematics. One has to see how do you create a creative combination. This has to be all worked out. And multiple exit and entry option is another important feature of the undergraduate education. And master's and doctoral education will provide a sub-based specialization as a part of the higher education. The 3 to 4 year undergraduate course with multiple exit options, the 4 year program is the main recommendation in terms of the undergraduate program. Undergraduate degree will encompass, of course, liberal arts, multidisciplinary and holistic education. And then you have the chosen major and minor concept that is there. We have the vocational subjects, and later on, even professional education will be brought into this kind of an undergraduate education, which is a 4 year. The 3 year program, which is currently very much there, will be retained with the necessary changes to bring in more holisticity and interdisciplinarity. Both the 3 and 4 year programs lead to a degree with honors with research work. So that is another thing that one. So there is a provision for research work in the undergraduate program, which prepare on one side it really enriches the youngster, on the other side we certainly have a better preparation for the higher education, and ultimately exit provision does exist with a 2 year diploma in the with a 2 year diploma at the end of 2 years of undergraduate, and a 1 year certificate at the end of the first year of the undergraduate education. These are all drawn in a way in which there is enough provision for the person when he exits, he will have an appropriate kind of a professional career which can be chosen. And this is a preparation that you try to do in the first year and second year of the undergraduate education, with the proviso that in case in the later years you want to come back to the education with certain provisions with respect to the preparatory part of the entry, you can still continue your education to a third year or a fourth year or even higher education part of the postgraduate education. This is also kept as a flexibility in the system. On the master's side, 2 years for those with the 3 year undergraduate degree, 1 year for those with the 4 year undergraduate degree with honors, and an integrated 5 year program is the three kind of flexible way in which you can go towards master education. Next one I would like to bring is integrating professional education. Regarding the integration of professional education with general education, the policy aims to take a holistic view to the preparation of professionals by ensuring broad-based competencies and understanding of the social human context, a strong ethical compass and addition to the highest quality professional capacities. There is something holistic about the recommendation that we have made. I'm sure most of the professionals are very aware of this particular part of it, especially the IIT faculty and the academics. And but we have made a strong pitch for this because we think many of the higher education institutions, especially the university system, certainly need to address this much more seriously than what has been done so far. All institutions offering either professional or general education must be organically evolved into a multidisciplinary institution offering both by 2030.
The overall higher education sector will aim to be an integrated higher education system, including professional and vocational education. Thus, this approach will be applicable to all higher education institutions across the current streams, which will eventually merge into one coherent ecosystem of higher education. This is ultimately the objective by 2030, 2035. There is certainly a time frame. It's not easy to make this kind of transformation, but we think that we need an integrated professional education as a part of an overall higher education. Now we come to the quality higher academic research in the fields. Again, I don't have to carry coal to Newcastle by giving you why we should do research, but put some numbers here just to see that the situation in our country with respect to research. Whereas IITs and those ICERs and things like that, you have tremendous research and vibrant activity going along with teaching. The broader question of the university systems, both state and the central, I think we need to do quite a lot. Even though we do address this question of a quality academic research in the overall context of higher education institution, we would like to particularly make this policy focused on educational systems in the university, and many of the state universities and other private and some of the other private universities certainly has to review this in the context of the type of recommendation we made. And we do know the importance of the European Union. Estimate that two-thirds of the economic growth of Europe during they came the research. You had also, if you really look at the European accomplishments in the research and innovation, I was just trying to look at some of the details. 15% of all productivity gains in 2013, and that an annual increase of 0.2% of GDP in R&D investment result in an annual increase of 1.1% in GDP, a five-fold return for the type of outcome that they were getting. If you look at the present research and innovation investment in our case, 0.7, we can keep debating on that. One has to compare it with respect to something like 2.8 in US or for 4.3 in Israel or South Korea. These are the kind of which are 3 times the proportion of GDP. And this lower level of investment certainly meant the number of researchers in India per lakh of population is just 15. Numbers are 400, 800 kind of numbers. If you talk of US as an example, other it has an impact. I don't have to again emphasize low levels of patent application and scientific publication. So these are the kind of things, and certainly it was a very important agenda in the another discussion with regard to propagating research in the higher educational institutions. And so we have spent a considerable space and time to make sure that we have some very tangible recommendations on promoting this. Now, how have we tried to recommend it? We have tried to recommend the creation of a national research foundation. It is it is based on the fact that the policy will put emphasis on catalyzing and energizing research and innovation across the country in all academic disciplines, with particular focus on the state universities and colleges. I said that in the beginning, and that is where really the lacuna does exist, and they are serious there too. A fund to seed research in all universities and colleges so that synergies between the research and quality education can be leveraged maximally. NRF will fund across all disciplines. It's not only in engineering, and also it will expand the research and innovation at all universities and colleges, including private institutions. We have not made a distinction between private institutions and public funded institutions. And the criterion will be, of course, the merit of the proposal and the kind of capability to do research and the type of outcomes. And we need to make sure that they get the benefit of a funding system where this can be pushed further. After all, they also educate Indians, and many of the people depend on the private institutions for education. The NRF will have the provision to cover many themes: science and technology, social sciences, arts, humanities, and many more. In the scope, of course, everybody understands funding research through a competitive peer review process, building research capacity at academic institutions across the country through mentorship. There are very specific recommendations we have made regarding the mentorship, the type of bringing in
people who are veterans of research, who are at this time available for guiding research in these kind of institutions, who can spend some time doing research, guiding research, and also establishing the capability to conduct research in these kind of institutions, and then create the beneficial linkages between researchers, academy, everybody talks about this, and disseminating research through seminars, which is the other aspect of doing research. So these are the kind of things. This is just to give a little brief summary, a snapshot of the kind of thought that we are put into the National Research Foundation. We think this needs to be established, and this is also going to be. We had, of course, in our mind things like the National Research Foundation of USA. There are models of establishing this kind of a system, which really becomes a place where they address the excellence, the relevance, and the kind of outcomes with respect to research. And this has had a very strong influence on the support of research in the educational systems in many of the advanced countries, and particularly if you look at the models like US and Europe. And the other aspect that we have addressed is question of energized and educational capable faculty. We have spent devoted considerable space with regard to the questions of the faculty, the quality and engagement of its faculty. And virtually, we can say the faculty is put back at the heart of the higher education. The rampant practice of contractual appointment, one issue, very heavy teaching loads, these are all may not be applicable to institutions like IITs. But these are anyway, I don't have to emphasize these aspects of it with respect to the broader issue of higher education. The infrastructure support, most faculty do not even have a structural faculty recruitment and development plan. So we have gone into the details areas like recruitment, development plan, career proposal, progression, compensation management. Every part of the institutional development plan should carry this in the higher education. Appropriately designed a permanent employment tenure track system for the thing by 2030. Autonomous faculty empowered to make curricular choices, conduct assessment of students, infrastructure for continuous professional development. These are other aspects of it. And appropriately designed bridge courses for mid-career professionals to get into teaching. That's also available so that if anybody wants to get into the teaching profession from another area where you need to facilitate this by the appropriate bridge courses that can be worked out. One of the important things that we have tried to do is to consider the school education and the teachers for the school education. One thing we found that the existing system, the school education, doesn't meet the type of standards and the type of things that we need to have as a background for teaching at the school level by the conventional educational system providing teacher education. What we have tried to do is to move the school education preparation will be done in the multidisciplinary universities. Departments of education will be set up in many universities to offer a 4-year integrated state-specific BEd. The whole idea is to bring in BEd as one more of those undergraduate educational stream, one of the undergraduate educational stream, put it at a par with the other professional educational themes as well as the mainstream education. So BEd will be an undergraduate program of study covering both disciplinary and pedagogic teacher preparation courses for each stage of education, foundational to secondary. All subjects, including arts, sports, vocational education, they will be mainstream. On par with other undergraduate degrees, gradually the 4-year program will be eligible for master's and PhD programs. And the current 2-year BEd program will continue till 2030, but that after 2030, only those institutions who are capable or who are qualified to provide a 4-year teacher education can offer the 2-year teacher education. So we want to make sure that the standard, the quality, and the excellence that is intrinsic to defining the teacher education and preparation certainly it takes into account through the higher education systems overseeing the teacher preparation and education. 2-year program will be used for lateral entry of school teachers. There are also many interests in the people becoming school teachers in the lateral mode. Specifically designed courses in the pedagogy for mid-career professionals to become faculty will also be introduced. And I don't have to say substandard and dysfunctional teacher educational, thousands of them have been already shut down. And this is recommended to be reviewed. Either they move towards institutions like the degree giving autonomous colleges
or they close down or move over to other areas where the teacher education is not the main focus for these institutions. Something on the educational technology, Professor Ram Gopal mentioned about this with respect to the Prime Minister's this thing. We have addressed the questions of integrating technology at all levels of education. There is a very specific section where we have discussed this. I don't think I need to go much into the details of this. Again, the questions of four broad categories, well known: improving teaching, learning, imitation, and supporting teacher preparation, continuous teacher professional development, enhancing educational access to disadvantaged groups, streamlining educational planning, administration, and management, and teacher training for trade. The edutech is critical. And towards this, I also bring in some example where improving teaching, learning, and evaluation as a part of the educational system's resilience during the recent crisis like the COVID-19, the online education, synchronous mode, live interactions, and asynchronous mode, blending high-quality pre-recorded content, rapid feedback with automated smart evaluation. So these are the kind of things on the improving the teaching and learning and education. Example regarding the supporting the teacher education and continuous teacher professional development, you have the recommender systems for content and certifications. Just another example in the COVID-19 scenario, the enhancing educational access to a disadvantaged group, connect the few specialized teachers to virtual classrooms of learners with specific needs, must address the digital divide. That is the biggest problem with respect to the implementation of some of the digital divide, and certainly this is to be seen. Now, streamlining education planning, administration, and management. We are also trying to set up as a part of this a national repository. There is a national repository of educational data to track progress in achieving educational goals. So this is just to give you a gist of the kind of thing that we have gone into details in the policy on the questions of educational introduction. But equally important is the fact we have tried to create a kind of a setup. It is not creating a lab, or it's not creating a facility, but it's a kind of a forum, a national educational technology forum, which we have recommended to be set up with the following rules to provide. The reason why we thought about this kind of a body in the context of choices, in the context of selection, in the context of a research in educational technology, in the context of adaptation of educational technology from other sources of technology. The reason why I thought is the moment you throw open an technology as a facilitator for certain type of function, whether it is related to education or many other areas, it could be even to deal with energy from the waste. The type of technology and the type of options that will be available are enormous. And most of the time, the ability to make choices is one of the biggest problems that we see. The questions of when ISRO did work related to a national, what you may call as a developmental program, where you wanted to bring educational information to remote areas. The choice was to make sure that we create educational material. But what were the materials? Those materials had to be researched whether it is appropriate for the tribal population which is going to receive the material. 2 to 3 years of research work was needed before you could decide what the educational material and the technique of reaching the local population who will receive those material, and they will get enriched themselves in the process. This is a major challenge. This is one of the kind of example that if you want to proliferate the technology, you need to have a means of studying it, understand, evaluate, and regulate it. That is the idea that National Educational Technology Forum that we have tried to set up to provide an independent evidence-based advice to state and governments on adoption of technology-based interventions, to build intellectual and institutional capacities in educational technology, to envision strategic thrust in areas of technology domain, and to promote education in them among educational institutions, and to articulate new directions of research and innovation, the use of technology for improving education. We would assume that these kind of things, also the actual activities on research and things, will be carried out by the Department of Education, which will come up in the higher educational institution, at least some of the higher educational institution.
So the National Educational Technology Forum will maintain a regular inflow of authentic data from multiple sources, including the educational technology innovators and practitioners, particularly at the grassroots level. Disruptive technology, I don't know, this is something you're very much day to day, you're seized with. The 1986-1992 policy could not expect the internet's disruption. This policy fully expects the educational system to face many technological disruptions, artificial intelligence, machine learning, and so on. Two major aspects related to such disruptive technology we have identified: harnessing technology to improve educational outcome, that is human plus artificial intelligence, hybrid interactive systems, education in new and disruptive technologies, identifying them and preparing students in new large numbers. And finally, the project addresses both these kind of a thing, the policy. Now, on the governance side, I've just tried to, again, we got the policy in the beginning of my talk. I'm just coming back to the policy side and what is the kind of a governance structure that has been done. I am trying to here show the state education and the central education in two color codings. The blue is the color code for higher education and the yellow is the color code for this. And the main thing is the central agency for the education, the CABE, which is currently there, a council of the educational the thing. This particular CABE, the Central Advisory Board of Education, is now in this policy, they have elevated to the level that they will oversee the overall administration, governance, and evaluation of how the policy is going to work at the from the central level, and also to make fine tuning or midterm corrections if needed, and virtually becomes a kind of a kind of a reviewer and evaluator, and also a recommender with respect to the changes needed in the context of the higher education. So this is the system which is adopting the Central Advisory Board and making it more empowered. Then we have an Higher Educational Commission of India, which is what is recommended to be set it up as the highest body on the higher educational commissions. As a part of the governance, you have the four major verticals that are there under the HECI. One is academic and standard setting, which can be the PS, the professional standard setting bodies, and so on. That GEC, General Education Council, the National Council of Technical Education, the All India Council of Technical, the medical. Ultimately, they will all come under the PS, the professional standard setting bodies, under the academic and standard setting. And on the academic side, you have, of course, the National Higher Energy Qualification Framework for higher education. And then you have the second one, which is regulation, the National Higher Educational Regulatory Body. And then you have accreditation, National Accreditation, this is the council. Then you have the funding, Higher Educational Grants Council. So these are the four verticals under a Higher Educational Commission of India. This is what is recommended. And of course, the education provision will continue to be given by the autonomous institutions and other types of institutions which are a part of the higher education or school education. So this is the kind of a structure, broad structure, that we have tried to evolve with respect to the governance of the educational system, and with this clear delineation of the higher education part of it. Important about this is the fact that empowered governance and autonomy of higher education. This is something which I don't think that this need to be much discussed when a place like IIT or IAC, but it's good to know that this is one of the things that had been of concern while they were debating on the subject with several of the experts in this area. That recognizes the effective governance and leadership is the key to creation of a culture of excellence in the innovation of higher educational institutions. All the higher educational institutions in the next 15 years will become autonomous, self-governing entities through a system of graded accreditation or graded autonomy. With appropriate data accreditation, such institutions shall establish a board of governors consisting of highly qualified and competent individuals with proven capabilities and a strong sense of commitment, something which we need to do for many of the higher education institutions in this country.
The board of governors will be empowered to govern the institution free of any external interference. Something everybody talks about it. This is something very explicitly made clear in the policy. Make all appointments, including that of the head of the institution, and take all decisions regarding the governors. The board of governors will be responsible and accountable to the stakeholders through transparent self-disclosures of the relevant thing. The board of governors to develop a strategic institutional development. These are all there in many of the institutions, long term, medium term, 5 years, or short term, 1 to 3 years, based on the institution can develop educational and research outcome, parameters for quality and capacity, improve organizational and financial and human resource development plan to assess the progress. So this is just to give you a flavor of what we have recommended in the empowered governance and autonomy of the higher education. So the most important aspect is the fact that we have strongly recommended the autonomy on the governance, on the academics, as also on the finances. Now, what is the kind of way forward before I conclude the thing? There are several things I did mention in the beginning of my talk that there has been one of the most important steps that was taken immediately after the government took decision on accepting this recommendation with necessary inputs from public domain and other sources is the fact that once they knew that there were a number of presentations, there were a number of discussions, there were a number of seminars and other kinds of interactive systems. And both Honorable Prime Minister and Honorable President were involved in many of these. I don't have to say that here. Many of you were there as a part of that particular thing. So there is quite a lot that has happened in terms of sensitizing the policy in its role, but certainly there are many things which continue to be inquired about, seek clarification about, and not every some of them will come forward only when you try to do these things. You start getting a feel of the issues, and that is where I said about the midterm correction or fine tuning or better clarification or change of strategy. This will be a part and parcel of this, but by and large, I find that this is understood by many of the policymakers and implementation the related responsible people. The MOE itself has done an action plan. Now they have done it. I understand. They have, because I'm telling this both this part of it more from the input that I received rather than trying to be a part of it. But I want to say that the MOE has certainly provided a good action plan, which they have worked it out, which has got something like 100 and they have taken the higher education policy section. They have looked at the various policies items. They have converted them into identified action plans, and 181 activities have been identified with the time frame that it needs to do this under 16 broad themes. This is what they have tried to do. We need to do this. There's a continuous churning of these ideas, and some discussions are going on this. The UGC on its own has been also organizing conclaves for discussions on this particular thing. And then there have been a lot of the outreach of the policy to different segments of the governance systems of the country, both the central and the state, has been another major feature of the recent efforts in trying to make sure that the policy is read, understood, and then come out with suitable strategies of implementation which are applicable, because there are the local issues also. One has to keep it in mind. There is a broad strategy that we need to have for the country, for the policy to be translated into the next step of implementation, and also specifics with respect to the local conditions or the regional conditions and things of that kind, which is more than just the policy. It has got finances, it has got the resources, human resource, and many other things. So this is something on which work will be done. But the fact I would like to emphasize is, and you know this again because you are a part of a system which is implementing it, that this work is in the forward, in the movement. And I cannot but conclude with the statement that, as I said in the beginning, I think this is a very unique policy. It has its own challenges to implement. But I think what is important and what is reassuring for some of us is the fact that
many elements of this has been done in some form or other by institutions. And I mentioned about the IIT Delhi because of its pioneering role in areas like multidisciplinarity and approach of science, technology, and policy, society, or more recently, with respect to humanity and social sciences to be integrated into the undergraduate education. So these are things on which it is not that these are all totally new because of the policy, but there is much more that has been done through the various actions and directions and visions of various leaders and institutions of this country. I'm sure that we need to understand it very clearly. We need to see how that can be adopted and how this policy itself can aid in taking it forward. So, with these few words, I would like to thank again the Institute, the director, deputy director, and others for this privilege of talking to you and sharing my thoughts with you. Thank you very much. My name is K. Ramachandran. Currently, I work at Senior Advisor, Unit for International Cooperation, National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi. The topic I have today is importance of policy in education and the fundamental principles guiding the National Education Policy 2020. Let me take the first part. What is the importance of a policy in the field of education? A policy normally gives a direction for education development in the country, say, for the next 10 years, next 20 years, and so on. Policy sets a vision. For instance, the National Policy on Education 2020 envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India into an equitable, vibrant knowledge society by providing quality education to all, thereby making India a knowledge superpower. That is the overall vision. So a policy provides a vision based on which we can formulate programmatic interventions to fulfill the vision, at the same time also to meet the education sector development programs in the country. The National Education Policy 2020 has certain fundamental principles guiding it. Number one, for instance, the policy seeks to recognize, identify, and foster the unique capabilities of each student so that we can nurture and foster her or his holistic development. The term holistic development is very important. I'll come back to that later. The second term, which is very important for all of us, is the term flexibility. The NEP-2020 envisages flexibility in paths of learning, in choice of programs and courses,
so that the education can be tuned to the interest and talent of each student. So this is the second principle guiding the policy. The third principle is what we call honoring student diversity. India is a country of tremendous diversity in terms of socio-economic status, in terms of culture, in terms of language, and so on. And therefore, the kind of students we get also would be of tremendous diversity. Many of them could be at the undergraduate, postgraduate level, first generation learners. How do we honor this diversity? Let me get back to the term holistic development. What do we mean by this term, holistic education? It simply means an education program that would help develop all capacities of human beings. For example, intellectual development or intellectual capacities, physical capacities, social development, emotional development, aesthetic development, ethical practices, and moral development, all in an integrative form. To have this integrated approach, therefore, will require exposure of students to or building capacities across variety of disciplines like arts, humanities, social sciences, natural sciences, vocational education, performing and visual arts, and so on. That would be what you call a multidisciplinary education approach. So to promote holistic development in the higher education sector, two quick actions. Number one, moving higher education institutions into large multidisciplinary institutions. And the word large is also important. In India, we have a large number of standalone institutions with the enrollment in many cases less than 1,000 and even less than 500. How do we move these single stream higher education institutions to a multidisciplinary institution? That becomes a transformative initiative, number one, for us. Second, can we offer in our universities and colleges multidisciplinary programs? That means a person may major in physics, maybe the person may offer a minor or opt for a minor in music or a visual art or history or economics. That means there is no clear-cut demarcation between arts, sciences, vocational field, and so on. That means the boundary between different areas of knowledge can be removed and get an integrated holistic education. Students are given options to choose courses or programs of study according to their interests and talents. And that is possible only we offer what we call multidisciplinary education. Gradually, all undergraduate programs in the country will move towards a multidisciplinary education approach, including those related to professional education, vocational education, and so on. So therefore, many of these professional technical
and vocational education programs also will have this approach, what we call a multidisciplinary approach to education. So this is a transformative initiative we envisage through the implementation of the National Education Policy 2020. Third, the National Education Policy 2020 envisages what we call institutional restructuring and consolidation. What do we mean by this? All higher education institutions in the country would be categorized into 3 groups. Number 1, those which are referred to research-intensive university. They will offer high-quality research programs in addition to high-quality teaching. That means the focus will be on both high-quality research and teaching. This will be one set of higher education institutions. Second, teaching-intensive universities. They will focus more on high-quality teaching, but at the same time, they will also do significant research. This is a second category. The third category belongs to what is referred to as autonomous colleges or constituent colleges, which can award undergraduate degrees, but they will also, if they accept 4-year undergraduate program, will also have research projects done by the students. These are the 3 categories of institutions we propose to have during the next 10 years. Research-intensive universities, teaching-intensive universities, autonomous colleges, or constituent colleges, which will award undergraduate degrees. Gradually through this, the affiliating system followed by the current universities will go away. It means many of them would become, the colleges affiliated now, would become what is referred to as autonomous colleges or constituent colleges, which would be an integral part of the university. So this is what we call institutional restructuring and consolidation. The fourth aspect, if you really want to improve the quality of education, make it multidisciplinary approach to education, we will need to attempt revamping of curriculum, including pedagogy and assessment program. Therefore, we will need to undertake curricular revision. Learning content should be revised. Pedagogical approaches should be made in tune with the revised curricular structure, and assessment that would help in moving towards, in terms of the multidisciplinary approach. This is what we call moving towards academic excellence. Now, academic excellence, as I indicated earlier, includes 3 things. Number 1, enhancing the relevance of learning contents. This is one aspect. The syllabi has to be revised, and the contents related to these must be improved. Second element of academic excellence is what is referred to as teaching excellence. How can we ensure that the teaching learning process is improved to make it excellent
in terms of imparting relevant knowledge, skills, attitudes, and values among all our students. Third element of academic excellence is, as I indicated earlier, improving the assessment methodologies and procedures. The policy talks about 3 approaches to assessment. Number 1, assessment of learning. That means assessment of learning outcomes, expected learning outcomes. Sometimes we call summative assessment. This is one aspect that helps students to move towards certification and so on, improve learning process, and see how we can move forward. The second element is what we call assessment for learning. Teachers assess learning to improve their own teaching methodologies, instructional strategies, pace, styles, and so on. This is essentially what is referred to as formative assessment. In fact, the emphasis now will be more and more on formative assessment. The next element is what we call assessment as learning. After assessment, students have what we call self-assessment strategy. Can they make self-corrections? Can they do self-monitoring of expected learning outcomes and make corrections required to enhance learning? That means the students themselves will use assessment to improve learning processes. That is assessment as learning. All these are part of what we call academic excellence. The next element of policy is faculty as the main part of learning process. Faculty at the heart of learning process. It means faculty excellence is something we aim at. This would need high quality induction programs for university and college faculty, high quality refresher program for the existing 1.5 million faculty in universities and colleges, for their continuous professional learning and development. And through that, we can bring about faculty excellence for 3 core functions. Number 1, what we call teaching excellence, scholarship, and so on. Including next one, excellence in research, teaching, and scholarship. So one important aspect of policy, therefore, is can we enhance the quality of research being done by Indian universities through the creation of the National Research Foundation, which will fund peer-reviewed research proposals and programs proposed to be undertaken by universities, mainly universities and faculty of universities and students. So therefore, the next transformative initiative relates to enhancing quality of research or catalyzing quality research and innovations. This is again a transformative initiative. The next transformative initiative
we are talking about is, again, in the context of academic excellence, is utilizing technology. That means leveraging technological and digital technologies in education for 3-4 purposes. Number one, enhancing access to quality education. Number one is this. Second, improving the quality of teaching and learning process in universities and colleges and other higher education institutions. Third, can we leverage technology for continuous professional learning and development of our faculty in universities and colleges? Fourth, can we use technology to improve educational planning and administration at all levels of education, including higher education management system? Next transformative initiative in this context is changing the regulatory system of higher education. We now have a single body regulating the higher education system. Can we ensure that the higher education system have a body for regulatory functions, a separate body, maybe named as Higher Education Regulatory Authority? Second, a body for standard setting in higher education, a separate body for standard setting, referred to as General Education Council. The third body, as we have now, for assessment and accreditation of higher education institutions. What is being done by NAC? Can NAC be a meta-accreditation body, which may have many more bodies to accredit, and NAC plays the role of a meta-accreditation coordination body? Last, a body for financing higher education. All together, all these four, that is regulatory body, standard setting body, accreditation body, financing body, under an umbrella organization called the Higher Education Commission of India. This is considered to be another transformative initiative. What the policy proposed is, while regulating higher education, we want a system that is simple but tight, that not too many indicators, take a few indicators to accredit a body, regulate a body, but enforce it tightly. So that's the kind of thing we are talking, that this system will help develop quality education institutions. And in this context, technology is an important aspect as well. The next element in the context is policy is based on what you call equity and inclusion in all higher education institutions and so on. So equity and inclusion, I consider inclusion as providing access to success, not just access to facilities, and ensuring retention. Can we ensure that all enrolled students in the country will have access to success? They would attain the expected learning outcomes in the case of all students. So equity and inclusion
as cornerstone of the National Education Policy 2020. Next in the case is, can we ensure what it called the support system for all colleges and universities, a quality learning environment to ensure a conducive learning environment for, a support system for students, how we can do it. So an important emphasis of the policy is on what is referred to this as improving the quality of learning environment and support systems, including the healthcare systems for students and faculty. Can we attempt that? Last but not least, I talked about this. When we say continuous professional development of faculty, I normally mention 5-6 areas of action. Number one, that training is important, as we do through this program. But in addition to that, can we have faculty exposed to good lectures by experts in the field on variety of disciplinary areas and so on. Number two, can we have demonstration lessons, demonstration teaching for all faculty members, subject related, subject specific, and so on. Third, we may have virtual or in-person subject specific groups which can meet virtually or in person once a month to discuss issues related to subject areas and so on. Next, can we provide opportunities to faculty to have action research on pedagogy, curricular contents, learning assessment, and so on? Can we aim at that? Next, can we ensure opportunities for faculty to participate in state level, university level, national level seminars, conferences, and so on? That also contributes to faculty learning and development. And lastly, even international exposure to faculty, participating short-term programs abroad, customized to program on research and development, and can we do it? And that is one element. Since I have limited time, I'm not trying to say that the policy, when implemented totally, will help enhance student excellence, students capable of demonstrating the graduate attributes expected, the learning outcomes defined for all stages of education. Number one, this. Contribute to achieving academic excellence through improvement of learning contents, teaching, assessment practices. 3, achieving teaching excellence through the kind of programs we talked about. 4, achieving excellence in research and scholarship. 5, achieving staff excellence, non-academic staff in university. Can we achieve that? Next, can we give opportunities to international experience for our students and faculty? Faculty exchange program, student exchange program, and so on. Next, very important, as policy indicates, achieving excellence or quality
in university leadership, college leadership and management. You may ask me a question, what is the difference between leadership and management? A leader is one who sets a vision for your college or university, sets directions for actions during the next 10 years and so on, 15 years, 20 years. And through this, can we aim at reaching a gross enrollment ratio in higher education for the age group 18 to 23 years, 50% by 2030. That is a target. Can we reach that? So excellence in governance and leadership is extremely important thing. Management. A manager controls resources, deploys team to ensure that the proposed vision of a university is enhanced, achieved. And that becomes the role of a manager. To end my discussion, I would say, what is proposed is to implement these transformative initiatives during the next 10 years to ensure high quality higher education, to make India a global knowledge superpower during the next few years, to reach the overall vision of the National Education Policy 2020. And in this, faculty of colleges and universities have a pivotal role. And that is why policy says teachers and faculty at the heart of the learning process. So I end by saying, next few years, we invest more in faculty, more in continuous professional learning and development of faculty in each of our higher education institutions to move towards a multidisciplinary higher education institution, to implement a multidisciplinary program, to improve leadership at all levels, to enhance governance management, and these are all part and parcel of the NEP 2020. I stop at this stage. Thank you very much for your kind attention.